A good crowd. Hello, welcome to Habitat Studios. My name is Ash Malhotra. I will be your host for today. It's good to see some faces. People at the back, you guys can come ahead. I've had a shower. I'm sure the people out here don't bite. I'm fine, man. You guys can come ahead. We've got a small crowd, so you guys can come ahead. There's space in the second row, there's space in the front row. If you guys are comfortable, be comfortable. Not gonna force you guys. How are we doing? Good? I'm good. Thank you for asking. Nobody asks the host normally. It's like just the host talking one way, the response coming. The host also thinks, how's the host doing? So thank you for that. Thank you so much for that. How many of you guys are coming to a poetry open mic for the first time? Wow, we got a good crowd. And how many of you guys are coming here for the first time? Okay, most of you guys. Okay, I'm just gonna go over some quick rules before we begin the evening. So you guys will have 4 minutes to perform. The timer is going to be up there. You guys can turn around and see the timer if you want. The timer will start like that, counting down to your 4 minutes. In those 4 minutes, perform as many pieces as you want. If you guys are performing someone else's piece, give them credit. It's important to give credit. Artists rely on IP. It's like they only, apart from validation, like we've got only these two things. We don't get money. We just get like validation, applause, and IP. So please don't steal someone else's IP. You've got a light that's going to come up at 3 minutes 30 seconds. You guys can turn around and see that light. It's going to blink like that. And at 3 minutes 30 seconds is basically just your warning time that you guys have 30 seconds more left on stage. At 4 minutes, there will be another light that will just stay on, the same light. It's going to be the same light. You guys don't need to turn around. It's going to be the same light that's going to be on, saying that your 4 minutes are up. Please respect your time. Otherwise, I'll be standing there in the darks, and then like suddenly I'll keep coming. And then you guys will get really creeped out. And you all don't want that. It's a Sunday afternoon. All of you all have made it on a Sunday afternoon. Firstly, round of applause for all of you all for coming on a Sunday afternoon. So let's talk to some people. Let's get the crowd a bit warmed up. It's gonna be just us, unless some people join, for the next couple of hours. So it's good to get warmed up. Poetry open mics kind of get a bit, intense, and sometimes बहुत प्यार की बातें होती है. मैं भी करूँगा. घर जाके बहुत अपने एक्सेस को याद करते हैं. Baby, I shouldn't have left you. I promise I'll improve. That always happens. I have done it. There have been times where I performed a breakup poem and then I seen the audience, I was like, shit, वो तो इधर ही बैठी है. कैसे करूँगा मैं? But how are you doing, ma'am? How are you? Doing good? Are you performing? Are you excited? How many of you guys are audience members? A round of applause for audience members, guys. Without them, we don't have a show. We're artists, we need a stage. Even if there are 2 people in the audience and just a camera at the back, I will talk for from 10 a.m. to 10 p.m. Doesn't matter. But without an audience, we're nothing. So thank you so much for coming out and supporting people, supporting the arts, supporting everybody. Sir, how are you doing? Very good. How are you? I'm good, sir. Sir, you look a bit recognizable. So you're an actor, sir. Ji, ma'am. That's good to see, sir. Thank you. Thank you so much for coming. Ma'am, how are you doing? Good, thank you. You doing well? I'm good. See, the love for the host is amazing. I'm loving this. Yes, sir. Sir, you are the first person that has asked a host how you're doing. ये तो हम बातें करते रहते हैं. So how are you doing? Hi, I'm good. Good, sir. So where have you come from? I'm from Goregaon. From Goregaon. How many of you guys have traveled really far to come here? Where have you guys come from, ma'am? Fort? Cuff Parade. So? 20 meters away. It was difficult to walk. I understand the pain. Bro, you live 30 seconds away. Cardio ho gaya aaj ka, that means. You clocked in the calories. Bus ho gaya. 40 meter actually. That'll be too much for you, 40 meters going and coming. Acha, auto loga for the next 20 meters. Nice, sir. So where have you come? Vadala. Okay, I'm a South Bombay kid. So I am very bad. What's further, guys? Goregaon or Vadala? A very South Bombay question. So can we top Vadala? Yes, sir. Mulund. That tops Vadala, right? Yeah. Mira Road tops everything. I know that. I know Mira Road tops everything, sir. It's good to have you. You guys are feeling okay? So you guys know how this show is going to go? You guys are aware of the rules. So we're going to have some first-time performers.
as the host, it's my duty to make sure you guys are constantly, in the energy, like have the energy. You guys are gonna have fun, and I'm gonna keep coming back between performers. I'm gonna keep talking to you all. I'm gonna actually make you all play a couple of fun games to keep you guys live in. First time in a poetry open mic this has happened, at least the one that I've seen. We're gonna play some fun games. We're gonna keep the crowd entertained. I'm gonna show you some of my poetries. I'm gonna narrate some of my shairis. Please continue applauding the artists that come on stage. It takes a lot of effort. It takes a lot of courage to come up, and especially first-time performers. First-time performers, just even if you're not a first-time performer, just say you are. Like if you're nervous, it's fine. People will applaud, so it's fine. Like I said, all we need is applause. So, can we test it out? Yes. Can we see how well you'll applaud in the down the count of three? Perfect. Perfect. So now you guys have set the bar here, not me. You guys have set the bar here. You all have to maintain this. The minute it comes down, I will try to get you all back up, okay? Okay, so this is awkward because I'm the host and I have left the performer sheet outside. So, while that is brought to me, I will narrate one of my favorite poems for you guys. This is titled The Girl of My Dreams. I wrote this when I was going through a break, obviously. Thanks, Vivian. I wrote this when I was going through a breakup. And I hope you guys enjoy my misery. Like, aur kya bolu? So no, it's called The Girl of My Dreams. No. So yeah, okay. Thank you for bringing that up. Poetry are obviously of two kinds. There's शायरी, शेर, गज़लें, जिसपे आप जितना भी वाह वाह बोल रहे हैं, हु बोलना है, चेयर से गिरना है, स्टेज पे आके हक करना है, करो. That's recommended. It's in fact said that the more applause and the more wawa comes, the more motivated the shayar gets. And spoken word artists are like, there's some spoken word artists that like to stick in the flow. So if you want to applaud their work or you like a line that they've narrated, just snap. Just snap. It's a little more gentle because they don't want to break the flow. Shayari wale to mast, they are all excited. Tum bhi suno mera dard, tum bhi suno mera dard, tum bhi suno mera dard. Like shairis are like that, which is great. So, anyways, yeah, The Girl of My Dreams. I hope you guys enjoyed. I closed my eyes, but I saw her there, standing in front of me, radiating with elegance. She looked like a queen. It had been 15 years, and she was the first girl to ever steal my heart. Who knew life would be so kind to give me another chance to restart? Praying to God she remembered me, I approached her with nervous hands, hoping she could spare a few moments. I asked her for a dance. She held my hand as I led her to the floor. I asked her if she remembered who I was. Trying to place me in her head, she took a long pause, waiting until she realized it was the same person who fell for her as a kid. Then she nodded in agreement, and I understood that she did. As the song began, we reminisced on our childhood. Reliving those memories, we felt something we never knew we could. She held my hand and walked with me to look up at the sky. It was in that moment I knew I had to tell her that I felt the same as the years went by. Butterflies in our stomach, giggling with laughter, we forgot our despair. The minute our eyes locked with sparkle, we knew it was love that was in the air. I tried to pull her close to me to feel her heart against mine. As we held each other, it felt like two souls were lost in time. I held her waist and I bent down to give her a kiss. Unfortunately, my alarm went off as my eyes opened, and I was robbed of that moment of bliss, which is why the girl of my dreams will unfortunately always remain the girl of my dreams. Thank you very much. Keep the applause going as we call on our first performer, who's also a first-time performer at Habitat. Keep it going for Aditya. I'm a bit vertically challenged, so Oh, okay. have to. You can. No, we'll just lower it. Oh yeah, I was gonna just tell you guys how to do it. So there's a button here. However you guys want, it's pretty easy. So guys, keep the applause going for Aditya. Hi guys, I'm Aditya. I'm a first year student and I'm absolutely terrified right now. So I'm going to perform a poem which is called Lost in an Outwardly Volatile Existence, or Love. Here we go. In a world of hate, I often wonder, what is love? Is it the purity encapsulated in a star shooting across the sky?
Or is it the false hope and memories that made you and me cry? Is it the person you thought was going to be the sun to your moon? Or is she the bane you always thought was going to be your everlasting boon? To love is to find something you know you never lost. But in this crusade, we often forget the satanic cost. Is she the missing piece that promised to make you a whole? Was she the cherubim that fell down from chaos's shoal? Introspection often makes us question, did you do enough to love her as you must? Were you there to win her trust, or was it always lust? Was she someone who you thought you'll worship till your last dying breath, or was she just a ploy in your wicked game of Macbeth? Is your love an escape, a path to eternally be free? Is it a golden jail which has no silver key? Is it the warmth that will save you from the blistering cold? Or is it just a creeper that will mask your existence once it has taken a hold? The tragedy of our lives is that it is harder to love than it is to hate. At least with the latter, we know we have sealed our fate. But to love is to plunge despite every untoward sign. It is to accept that you and I must let go of something that was truly never mine. Sometimes we wonder if affection is truly worth love's game. Is to be detested and not to be loved truly one and the same? What differentiates ignorance and a feeling of fastidiously being ignored? In your heart of adoration, when did such venom get stored? To love is to let go, for it is no man's birthright. It is a soaring eagle, a fascination we are all lucky to sight. To love is to give in and be ready to get nothing back. For destiny chooses love's medals, and the prize is often the rack. Love is an anomaly, a contradiction in every way. Despite its muteness, it starkly decides what we say. Love is always dangerous, a test of wrong and right, for you must tremble in the darkness to truly appreciate the light. For you must tremble in the darkness to truly appreciate the light. Thank you. Guys, keep it going for Aditya. First time. Well done. Well done, well done, well done. That was really nice, man. That was really nice. This is the first time ever performing? Yeah. Like ever in life? No, so I've done elocution in the past, but Oh, okay. first time performing something. Poet. Oh, that's beautiful. Guys, another round of applause. First time performance. So I'm getting a chair because we're going to have some fun. Okay, so I'm going to make you guys play a short game. We're going to go starting from Aditya, is your double A, like your spelling perfect? So like we'll go in alphabetical order. Starts with double A. Roll number bhi class mein aise hi hota tha na? Yeah, I'm roll number 1. Roll number 1. 14 years. 14 years. Yeah, same. So Arsh Malhotra, like in my first school we had surname ke mutabik. So it was like Malhotra. So I had 45 kids in that one class. So I was like some 20, 24 always, between 20 and 25. And in my second school, they're like, no, we'll do it from first. So then I was top 5 always, only in roll number. बाकी में कुछ नहीं. अगर top 5 होता मैं यहाँ बैठता. Anyway, guys, so we're gonna play some games. This game that I thought we'll have some fun with everybody. We'll get them a bit involved. We'll get you guys also to get lively. It's called ABC. Okay. It's a fun improv game. How many of you guys have watched improv before? Yeah. Okay. So you guys might have seen the game. ABC is where I'm going to ask you guys for like a random letter. Okay. And like a random location. And we'll go in order, starting with Mr. Aditya. And we'll go round. We'll go like this. And we'll end at, sir, what's your name, sir? Sachin. Sachin. We'll end at Sachin, sir. And we'll see if we can form a scene in alphabetical order. So how it's going to work is, supposing it's a cafe. Okay, we're just going to build a small story because it's poetry and storytelling, so we should have some fun. We're going to build like a small story where we'll go like, say it's cafe and the letter that you've given me is K. So the first line has to start with K, saying, knowing Sam cannot eat chocolate, he's come to a chocolate area cafe. So the next letter has to start, the next line has to start with L. KLMNOP, right?
So we'll say something in L, then M, N, O, P, Q, R. We'll go in alphabetical order and we'll see if we can build like a small one paragraph story and we can see what we can do like a collective audience. Are you guys ready? Yes. Come on, you guys have come on a Sunday. Yes or no? That's good. Okay, so a random location where you visit with your parents. I love your enthusiasm, sir. Thank you so much for sitting in the front row. Garden. Anything else? Mandir. Okay, so this event is being live streamed on YouTube. I am not going to talk about Mandir and all here. It's being live streamed. No risk I'm taking. मंदिर को बनाना किधर है? हैबिटेट में मैं दोनों हाथ से लिखता हूँ राइट या लेफ्ट आई डोंट हैव एनी आई एम एम्बीडेक्स्ट्रस आई राइट विद आई डोंट सपोर्ट एनी वन आई एम सेंटर गाइस लाइव स्ट्रीम हो रहा है कैमरा पे तो नो रिस्क गाइस आई लाइक टू स्टे इन बॉम्बे आई लाइक टू स्टे इन इंडिया फॉर दैट मैटर भारत माता की जय. But yeah, anyway, so garden is a nice place where you go with your parents, right? Safe place also. Thank you, sir. Safe place. I love this audience. It's too interactive. Brilliant. Makes my life half easy, like my job half done, which is great. So garden. Okay, give me a random letter. D. Okay, sir. So D. Start making a sentence. Doing cartwheels with my parents in a garden. N, na? No, D. A B C D E. अच्छा वैसे. देखो टॉप 5 में नहीं आया था मैं. Hey, that's a nice idea though. I'll try that next time. So something with E. And sorry, E. And E. Oh, yeah. Elephant just crossed from the leg side. The flowers were plucked by a kid. Okay, so we've got doing cartwheels with my parents in the garden. Elephant just crossed from the leg side. The flowers were plucked from the leaves. Good going for my cartwheels. I got saved by the elephant and the kid who was plucking the flowers. Good going from my cartwheels. You've summed up this entire story. Love it. H. We're applauding on that. H. Having a pen and a book in Having a pen and a book in my hand. my hand in the garden. Nice. I wrote a poem while doing my cartwheels. You wrote a poem. Athletic. I can't write a poem sitting. J. It's okay, sir. You can say it with H. We're just trying an experiment. We're having fun. Husband kissed his wife. Husband kissed his wife in the garden. Ma'am. J. Kiss was very beautiful. Kiss was very beautiful. The lions were walking beside the elephant. Okay, so let's sum up the story till now. Because I think we need an interval just to sum up what's happening in the garden. In the garden, we have someone doing cartwheels with their parents. No, the good going cartwheel saved the parents, saved the boy from the parents and the elephant and the flower plucking person. While doing cartwheels, the boy was writing a poem and he saw a husband kissing his wife, and which kiss was good according to the person doing cartwheel. Great. And when he noticed the kiss was good, he also saw a lion in the distance. I'm loving this creativity. Ma'am, M. Me and my best friend were having fun. My best friend. Me and my best friend were having fun. Great. N. Now lion interrupts between them. Okay, I'm loving this. I'm loving where the story is going. So, opposite to the lion, there was 3 monkeys who were sitting and just washing and having a nice time. having a nice time. Okay, so I really think after the 3 monkeys, we need to sum it up once more. So let's sum it up. We've got a boy doing cartwheel who is being saved, through the cartwheel being saved from the flower plucking person and the elephant. While doing cartwheel, he was writing poetry and he noticed a husband kissing his wife. He analyzed that the kiss was good, and after seeing that the kiss was good, he notices a lion. And the lion interrupts. And no, not yet. We'll get to that. Climax tak abhi nahi pahunche. We're getting.
Ma'am said, so while he noticed the lion, he also notices two best friends having a good time. While that was happening, suddenly a lion interrupts them. Great. Whoa, wait, no, we missed out on the monkeys. Yes. So while the lion interrupts them, three monkeys saw this entire fiasco happening and had fun. Okay, we've built an entire picture with like a garden and what's happening around it. That's brilliant. I'm loving this. Poetry was organized in the garden itself. Poetry, the open mic, you mean? Okay, great. So poetry open mic is also happening side May garden May. That's great. Q. Fox is coming there suddenly. Okay, I'll take it. So it's okay. Queen Fox. We improvise. And we don't say no to anybody. We say, okay, cool, you'll have done well. So the Queen Fox has come to interrupt somebody. So after the three monkeys watching, poetry open mic was happening, and the Queen Fox has interrupted now this entire fiasco. People should run from the Queen Mice. Just a hint. QR. It's okay, take your time. Really wanted to run away, but was excited to see what the lion was doing. Okay, I'm loving this. We're getting somewhere. We're getting somewhere. Suddenly the monkeys noticed the lion and it was an all-out war. Okay, we've got to Jungle Book Part 3, guys. I need to get back and kind of see what's happening. Okay. So up till now, we've had apparently a guy that's Mowgli who's doing cartwheels. Yeah, let's just call him Mowgli, why not? So Mowgli is doing cartwheels and he's getting saved by the elephant and the flower plucking person. While doing cartwheels, Mowgli decides to write poetry. And his inspiration for poetry was apparently a husband and a wife kissing. After analyzing that the kiss was very good, the lion interrupts, however. While the lion is interrupting, the two best friends are having a good time. No, so the best friend is having a good time and then the lion interrupts, right? While all of this is happening, three monkeys are just chilling, apne bhai. Three monkeys, see no evil, say no evil, chilling. They're like, oh, kya chal raha hai, kya chal raha hai? And they see, oh, okay, this is happening. Then they lose their shit. The Queen Fox interrupts a poetry open mic that's happening at the background of the jungle. And the monkeys run away. And suddenly, the monkeys run away. Sorry, what did you say? They wanted to run. The boy wanted to run, but was excited to see. Boy was excited. So the boy has no life. The boy is chilling there. Like, ye meri zindagi hai. And suddenly, the monkeys, And the lions and ran away. No. Oh, they're fighting. They're fighting. Lion King में भी ऐसे ही कुछ हुआ था ना? We've got the last few. Let's see where the story ends. I'm really sorry to ruin this, but then he wakes up from the Dream. Oh, wow. Okay, so all of this was a dream, which is fine. Inception भी ऐसे ही था, guys. उसको वो सारे awards मिले. हमें भी मिलेंगे. Don't worry. I'm loving the story. Uncle is getting his nephew ready for the garden. He's getting, sorry? Ready for the garden. He's getting ready for the garden. Oh, so now he goes to the garden. Whoa! Twist! Twist! Story में twist, guys. Wow, loving it. Story में twist आया है. So, होगा bro. I've lost count. Now let's just build a story if we're getting somewhere. Forget the alphabets. Venom bites the uncle. Venom bites the uncle while going to the garden. But snake bites, just saying. ये दोस्त है मेरा, I can do थोड़ा ऐसे. It's not like I'm just picking on a random audience and roasting him. He's a friend. I can pick on him a bit. Okay, so the venom bites. Very, very large snake. Very, very large snake bites the uncle. Okay. सो ही जाता bro. उठा क्यों नींद से? Sachin sir. Sachin sir saying the end. Okay, great. So let's recap the story once more. What we've all collectively built together. Mowgli is doing cartwheels in the jungle. In the garden, he is avoiding the cartwheels. He sees an elephant on the leg side. So through the cartwheels, it was so good. He avoids that and the flower plucking person. Poetry, ma'am. Sorry, I lost what you said. It's been a long story. Holding a pen and a book. Holding a pen and a book. Through holding a pen and a book, writing poetry. While writing poetry, he realizes his inspiration was the husband and wife kissing. That husband and wife's kiss was so good, he wrote poetry. Then he saw a lion in the jungle. While the best friends were having fun, the lion comes in, interrupts the best friend fiasco.
While that is happening, 3 monkeys are chilling and enjoying life. The poetry open mic is happening in the background because why not? A queen fox comes in and interrupts the entire fiasco. The lion and the boy thinks that he wants to run away, but he wants to see. He really wants to run away, but he sits and sees. The monkeys and the lions fight. Then we realize, ये तो सपना था. ये तो सपना था. Then he goes to the garden and then he realizes that this is what his day is going to look like. But before that, the very, very large snake bites him. Guys, round of applause for y'all. A round of applause. Keep the applause going. Keep the applause going for our next performer, Roshni. Keep it going, Shikam. Okay. So, आवाज़ आ रही है? I am Roshni Prajapati and I am also in a first year. So, last time मैंने रेड फ्लैग्स के बारे में बात की थी and then suddenly बस अभी ब्रेकअप हुआ है बस अभी ठीक है तो खूब जम के गम निकलेगा. I like to write हिंदी पोइट्रीज so I hope पसंद आएगा. मेरे जाने के बाद तुम ये सवाल करना क्या क्या भरा था इस दिल में ज़रा ख्याल करना. जब एतबार हो जाए मेरी तकलीफ़ों पे तुम रखना खुद को मेरी जगह फिर वही हाल करना. क्योंकि मेरे अंदर तो अब हिम्मत भी नहीं निभा लेना तुम दोनों किरदार और कहानी का अंत तैयार रखना. ये किस्सा मुसलसल एक रोज़ तो ख़त्म होगा ही फिर क्यों उन सवालों को हमारे दरमियाँ बार बार रखना. ख़त्म कर दो आज ही सब तय होने दो क्या ज़रूरी है इस तड़पते दिल को बेजार रखना. शुक्रिया. एंड जब ब्रेकअप होने वाला होता है एंड सडनली द पर्सन कम एंड कहता है कि देखो डोंट माइंड ना, नाराज़ मत होना और खुश रहना, मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ और मुझे बेवफा मत समझना. तो उस पर कुछ यूँ कहा था कि तुमसे सनम ये रसवाई कैसी जब ना हो मंजूर तो बेवफाई कैसी. तुमसे सनम ये रसवाई कैसी जब ना हो मंजूर तो बेवफाई कैसी. हर समय कोई पसंद ही रहे ज़रूरी है क्या जब बात ही ना हो रिश्ते में तो सफाई कैसी. तुम सही हो कुछ भी गलत नहीं जब कभी थे ही नहीं हमारे तो ये जुदाई कैसी. तुम्हारा ये सवाल कि क्या किया है मैंने तुम्हारे लिए जब एतबार नहीं हम पर तो ये दुहाई कैसी. और जिस रिश्ते को सींचा था इतने शौक़ से हमारे एक फ़ैसले पर टूट जाए फिर हमने वफ़ा निभाई कैसी. जब सब कुछ तय है तो ठीक है ना तुम्हारे साथ ना होने पर ये तन्हाई कैसी. और जब आपको पता चल जाता है कि अब तो भाई हो गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं है और आप उनको खुश देखते हो तो खुद भी मान लेना चाहिए कि हाँ अब हमें भी खुश होना है. तो कुछ यूँ है कि मैंने उसकी गली में जाना छोड़ दिया जब से उसको आज़माना छोड़ दिया. हम उसके पास हैं फिर भी पास में जाना छोड़ दिया है दिल लगाना दिल जलाना छोड़ दिया. उससे किया हर बहाना अब बनाना छोड़ दिया. सुकून में हूँ अब कि क्या बताऊँ तस्वीर को देखकर मुस्कुराना छोड़ दिया. मैं हूँ फरेबी मान लिया गैरों से अब क्या बहस करूँ तेरे जैसे ढोंग को मैंने मुंह लगाना छोड़ दिया. Guys, one more time for Roshni, guys. That's beautiful. तो आपने जो तबाही की बात की है तो फॉर द पीपल आई डोंट नो मैं देवदास शायर हूँ. मैं इंग्लिश में ज़्यादा लिखता हूँ. आई डोंट राइट मच इन हिंदी. आई ट्राई क्योंकि हिंदी के जो लफ्ज़ है हिंदी के जो सॉरी साउथ बॉम्बे पर पता था कोई ना कोई तो बोलेगा. लेकिन साउथ बॉम्बे का लग रहा है जब हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं भैया तो नहीं बोल रहा ना.
बट क्योंकि हिंदी के जो लफ्ज़ है, हिंदी के जो शब्द है, वो दिल पे क्या छूती है यार. लाइक वो इंग्लिश में है बात, ऐसा नहीं है. आई एम नॉट अंडरमाइंड. देखो लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, किसी को ऑफेंड नहीं करना है मुझे. इंग्लिश स्पीकर्स ऑल्सो ये, हिंदी स्पीकर्स ऑल्सो वाह वाह, उनके लिए बैलेंस्ड है. सेंटर आई एम, नो एम्बीडेक्स्ट्रस गाइस, रिमेंबर दैट. बट एक शेर लिखा था मैंने हाल ही में, वही तबाही पे. मैं भूल गया हूँ. हाँ, थोड़े खुशियों के पल में ही हम जिंदगी जी लेंगे. थोड़े खुशियों के पल में ही हम जिंदगी जी लेंगे. तेरा प्यार आज ना मिला तो एक के पेग के बजाय बोतल ही पी लेंगे. मैंने बोला था देवदास शायर हूँ. और so I'm going to ask you guys a question, and then I'll tell you guys a small story before we call on our next act. What is the cringiest thing you guys have done for love? Written a poem. Written a poem. Like if you guys don't mind, I'm not like forcing everyone to say it's okay. This is not a... Sir? Written a poem. Ma'am, written a poem. Cringiest thing. Acha. My wife, who else would know? I'm loving sir in the front. One of my most enthusiastic audience members I've had, and I'm loving it. Thank you, sir. और किससे पूछूं? That's true. That's true. That's true. शादी कर ली. शादी कर ली मैंने. Yes, sir. I wrote a letter and posted, but that letter come to my home. It came to your home only, so. And your uncle saw it. Cringiest. चलेगा, होता है. Single थे आप उस टाइम? अभी भी हूँ. ये है शायर का असली दर्द. अब नहीं तो हम क्यों लिखते इतना? So I'll tell you guys a small story before we call on our next performer. It's the cringiest thing I've ever done, and after, please look at me the same way. Like I know you all will judge me, just don't. It's fine. I was 17 at the time. I'm not very old now. I'm 24 still, but still, just don't judge. I was another person back then. Anyway, so a little background about me. I went to an all-boys school until the 5th grade, and first time when I said that, I've heard of wow, all boys. पता है इसलिए तो 6 में माँ बाप ने बोला ये अगर इसके बाद ये किसी लड़की से नहीं मिला कैसे बात करेगा लड़की से. And bro, that came true in the 6th grade only. So in the 6th grade when I moved to a co-ed school, I realized that there's another species that we can talk to. And I'm like, okay, no offense. I am still a feminist, guys. I know record हो रहा है. I'm a feminist, don't want to offend anyone, but at that time I didn't know how to speak to girls. I didn't know how to speak to women. I was brought up like around boys, and in an all-boys school we were rowdy, yeah. We were rough. I used to come back with some scratch or some mark or something on the other. And my mom was like, wrestling कर रहा है, क्या कर रहा है school में? But so when I moved, I didn't know how to talk to girls. And obviously coming from an all-boys school, I was very loud. I was very hyperactive. Not obvious, it's just me. I was just very loud and hyperactive. And but I still had some communication skills. So thoda popular tha main, you know, in the co-ed school, I got a bit. I was on the student council for 2 years, all of that jazz, but teachers didn't like me. Teachers were like, nahi, you might be good in everything else but your grades, but we can't do anything about that. Teachers didn't like me, and तभी I realized that लड़कियों को भी इतना अच्छा, you know, talking like this, keep talking, अच्छा नहीं लगता. तो I was like, ठीक है, 11th grade में ना, 10th के बाद थोड़े बच्चे छोड़ देते हैं, they come, other kids come in the 11th as well. Some people stay, some people leave. Like new kids will come in the 11th grade. So my 11th grade में I'll reinvent myself. And first day only I came to school all reinvented as Arsh Malhotra. I was going to have a girlfriend now. But it's difficult being the 5th, 7th, 9th wheel, bro. Like at that time, it's very difficult. Like I go out and then like all like 4 couples and me, and like stag entry मुझे भरना पड़ता है हमेशा. कितने पैसे गए stag entry में? कपलों को तो ठीक है, like मुझे भी पैसे बचाना है, but पता नहीं था ना उसके साथ क्या क्या आता है. No offense, ma'am. You guys are married, so I was talking about a relationship back then. So I was very cringy, yeah. I was very cringy. So this girl, I'm not going to take her name, so we'll call Tanya Simran. Okay? Identity protect karna hai, guys. So she came into the school, and as soon as I saw her only, I was like, कौन हो तुम? नहीं, जैसे शिवा, क्या हो तुम? चूतिया हूँ मैं. But
I looked at her and I was like, I'm going to, profess my love. But I kept it cool. I was like, I'm going to keep it cool. I'm going to play it cool. So we were talking and everything on WhatsApp. Everything's going good. And then she asks me for a movie. You have never seen someone switch so fast from Arsh Malhotra to Ali from Dhoom. मैंने अपने दिमाग में मैंने बच्चे के नाम प्लान कर दिए थे ब्रो. मैंने बोलते yes and we should name our kids Rishi and Rohan. I love those names. I was like नहीं. Yes, I would love to see the new Minions movie with you. And she basically, without telling me, calls her friend also, like another friend. Yeah, this was like basically telling someone your friend zone without telling someone your friend zoned. But I was like, नहीं bro, अपना we'll be strong, we'll be determined, we'll win her over. सख्त तो नहीं कह सकता, मैं बहुत पिघला हूँ. But I was like, फिर भी. So I went out for the movie and everything. And during the movie, she tells me, my birthday is coming up. And I was like, oh really? What do you want for your birthday? I hate my birthdays. I was like, why? My boyfriend, no. I was like, oh, your boyfriend? No, my ex-boyfriend. I was like, दिमाग में लड्डू फूटा. It's like my ex-boyfriend, no, doesn't care about my birthday. Last 2 birthdays were horrible for me, so I never look forward to. It's like मौके पे चौका मारेंगे हम. We will correct night in the shining armor, exactly. But broke shining armor. So like plastic का बना था. But I was like, नहीं, I'm going to do this. I'm going to do something special. So I sent her 7 gifts to her house anonymously for 7 days leading up to her birthday. Okay? I know, guys, don't judge. I told y'all. Be with me. And I did that, and it was a really nice thing. And I was like, on the 7th day, I'll profuse my love. But problem. अभी 7th grade, 11th grade में इतनी ही pocket money मिलती है. 7 gift भेजना है तो मैं क्या करूँ? I was falling short of about 1,500 rupees. Talking about 2015, so 1,500 rupees back then. I'm talking about 7-8 years ago. So talking about 1,500 rupees back then, and I went to my mom. My mom was like, no, not for a girl. Like, you're mad. She doesn't even, not even your girlfriend. What are you going to give 1,500 rupees? I'm not increasing your pocket money. I said, okay, so what do I do? I go and I think. Now, guys, I have to tell you something. I love my PlayStation. I really loved it. I really loved it. That collective, yes, I felt it. I really loved my PlayStation. PSP जो था. तो मैंने आज सुबह गूगल की है वैल्यू PSP की. ब्रांड न्यू वैल्यू इज़ 5,000 रुपीज़. सेकेंड हैंड कम से कम 2,500-3,000 में अब बिकेगी. अब मैं गया हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर, साउथ बॉम्बे बॉय, आई नो. हाजी अली पे एक है सेकेंड हैंड की दुकान, वो खरीदते हैं और बेचते हैं. जाके बेचा. मैं बोलूँगा मुझे 1,500 रुपये चाहिए तो मैं बार्गेन करूँगा. मैंने बोला 1,500. डन. ऐसे होता है बार्गेनिंग. फक. तो मैंने अपना PSP जो 7 साल पहले, जो आज 5,000 का बिक रहा है, 7 साल पहले कम से कम 7,000 का बिक रहा होगा, मैंने 1,500 में बेच के आ गया. मम्मा मम्मा PSP. मैं बच्चा थोड़ी हूँ. अरे बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, घंटा पढ़ाई करनी है. So I went and I was like, I'm going to, profuse my love for her. And I went and I was like, whatever your name, I'm not going to take the name, I already gave it to you guys, actual name. It's supposed to be a joke, लेकिन मैंने actual name बोल दिया, तो मैं वापस नहीं बोलूँगा. Stream पे जाके देख लेना. But I went to her and I was like, guys, I was like, Simran, I love you. She's like, oh, thank you. And the time between that movie and her birthday was about 3 months. मुझे नहीं पता था 3 महीने में उसका boyfriend already हो गया. So she says, thank you. I was just telling my boyfriend what an amazing friend you are and how lucky a girl would be to have you. Yes, collective. I was in love, no though. This doesn't mean you said no. तो मैं आज भी उसको मैसेज करता हूँ. I'm kidding. वो है लंदन में कहीं. But anyway, that was my story. I hope you guys enjoyed my Tabai. I thought I had to share it with you guys because you had spoken about Tabai. Like, yes, sir. कटा पहले कुछ हुआ ही नहीं. कटा ही यार. जिंदगी इतना काटती नहीं, मैं शायर बनता सर. But keep the energy going. I am going to call on our next performer. I think she's a first-time performer, and I apologize if I get the name pronunciation wrong. Can we have the applause going? For a first-time performer, Heenal. Keep it going, guys, until she comes on stage.
Hi guys, I'm Heenal. I'm a first time performer. Like right now he said, you do cringy shit when you are a kid, but little by little when you grow up, you stop doing it. Maturity hits. So just for your inner kid, आज भी जब खुद को आईने में देखती हूँ, आज भी जब खुद को आईने में देखती हूँ, एक छोटी सी बच्ची नज़र आती है, एक छोटी सी बच्ची नज़र आती है जिसे सारा जहान देखना है। नहीं शब्द से वो अनजान है, नहीं शब्द से ही वो अनजान है, पूरा उसका ये पूरा जहान है। शायद अब वो मैं नहीं हूँ, शायद अब वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में अब दुनिया भर की थकान है। उसे खुलकर जीना था, उसे खुलकर जीना था, उसे समुंदर का पानी पीना था। खिलखिली सी थी वो, खिलखिली सी थी वो, अब वो मैं नहीं। मुझे शांत रहना पसंद, वो बातों को उलझाती। कितनों ने उसे चुप कहा कि खामोशियाँ में ही बस गई। फिर आप बड़े होते हो, आपको एक ऐसा पर्सन मिलता है जो वापस आपका एक इनर चाइल्ड बाहर लाता है। झूठ बोलना एक आदत सी हो गई अब, झूठ बोलना एक आदत सी हो गई है, रोते आँखों पे हंसी की मुखौटा है। लोगों की भीड़ लगी हुई, लोगों की कई भीड़ लगी हुई, उस भीड़ में भी अकेलापन जो छा गया है। शायद वो अलग है, शायद वो अलग है, उसके साथ अकेला महसूस नहीं होता, सिर्फ उसके साथ खुल के बातें करने का अफसोस नहीं होता। कुछ रोज़ आओ बातें तो बताओ, कुछ रोज़ आओ बातें तो बताओ, यार हम अभी भी तो दोस्त है, ज़रा हाथ तो बढ़ाओ। खुशी से हम अनजान नहीं, खुशी से हम अनजान नहीं, गम हमेशा साथ है। ये ज़िंदगी की रीत है, हंस तो दो हम भी चल लेंगे साथ है। Let's give a huge round of applause for Heenal once more. तो आपका पहली बार है? Like ever or ever? Wow, guys, another round of applause for that. So today, just quick chat. I've not spoken to a few people here, so let's see how everyone's doing. We're almost like 4 performers down, so 3-4 performers down. Let's see how we're doing right now. Ma'am, I've not spoken to you. Ma'am, Queen Fox, ma'am. How are you doing, ma'am? You're doing well? Arre, thank you for asking. Sir, I owe you this hosting one. Thank you so much. All credit goes to sir sitting here. Ma'am, where have you come from? सूरत Surat. बट वैसे मैं हूँ बनारस से Banaras se. So, like, have you been living in Bombay or you just came to visit? आई एम लिविंग इन सूरत You're living in Surat, so you came just for this? Wow. Who was saying Mira Road was the longest? Ma'am, Surat se aayi hai. Just for this. Wow, ma'am. Dedication. Genuinely, that's great dedication. Are you performing, ma'am? यस Oh, that's great. We're very excited to hear you speak. Sir, sitting in front of me, sir. अच्छा, आप भी सूरत से आए? अरे, we've got 2 people all the way. Outstation audience is coming, yeah, for Habitat. क्या बात है? Sir, now I have to talk to you. You've been so enthusiastic, sir. So, sir, as we all know, you're an actor. We've seen you in quite a few films. At least I've seen you in Reddy and Tees Mar Khan in quite a few films, and we've loved your work. I was just confirming in the start, and I was trying to play it cool, you know. But now that we've got comfortable, I can be a bit relaxed. I was trying to play it cool in the start. I was like, Mr. Arya Babbar is here, but I'm just going to say, I've seen you before, you know, just like, because I was literally losing it on stage. And he sat in the front row, so big fan. So a round of applause for Arya Babbar, sir. Big fan. I was trying to play it cool. No. Aise nahi. Thank you, sir. That means a lot. Fantastic. Sir. Thank you, sir. Thank you. So, you've come from how far? Actually, we don't want to reveal your location and everything. You come from Juhu. It's not too. Is it too far? No, it's not. Not too far. Okay. Yeah, you know, No. My ex-girlfriend used to stay in Juhu. You know. Yeah. Dil se bhi dur. No, funny thing. So a little bit about me. I used to live in Vancouver, Canada, for the last 6 years, and I just moved back in September. And मैं उसको भी वही मिला.
5-6 साल पहले, एंड वो भी मुंबई की थी, मैं भी उधर ही रहता, तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस एक्चुअली वर्ली से जुहू था. लिटरली हमारा लॉन्ग डिस्टेंस वो था, बिकॉज इन अनवैको वी टू स्टे टुगेदर. यहाँ पे आके लाइक कौन जाएगा इतना दूर, एंड शी वाज आल्सो लाइक कौन आएगा इतनी दूर. एंड पीक ट्रैफिक, बॉम्बे ट्रैफिक इज प्री पैंडेमिक, सो बॉम्बे ट्रैफिक प्री पैंडेमिक वाज, तो इवन नाउ इट्स दैट, बट प्री पैंडेमिक, सो दैट वाज ओनली लॉन्ग डिस्टेंस. दैट वाज माई ओनली कनेक्शन टू जुहू एक्चुअली. एंड अमर जूस सेंटर का सब कुछ, जीनी डोसा, पाव भाजी, जो भी नहीं, लव जुहू. सो how many of else have traveled from, like we've got a few people, but anyone else we've not touched upon? Sachin sir, where have you traveled from? Sikar, Rajasthan. We're just getting further and further, guys. Come on, you guys can talk. Like I'm going to start picking on like class otherwise. Wow, Sikar, Rajasthan. Wow. That's good. Sir, you've just come, sir. Versova. चलो ठीक है, बॉम्बे में तो है, इतना पता है. But without further ado, can we start clapping? Can we start clapping for our next performer, Dakshesh? Yes, sir. Please come. Please keep clapping until he comes on stage. गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम दक्षेश. गला थोड़ा ख़राब है तो मैनेज कर लेना. सो हुआ ऐसा कि मुझे क्लासेस जाना था, तो मैं स्टेशन पे पहुंचा और ट्रेन पकड़ना था, तो ईयरपॉड्स लगे हैं कान में और गाना बज रहा है ये दूरियाँ, और मैं लेफ़्ट में देखता हूँ तो वो खड़ी थी. तो मेरी ट्रेन आई, मैं चढ़ा, फिर मैं रात भर सो नहीं पाया. तो दिल टूटा हुआ इंसान क्या करता है, सो नहीं पाता, या तो पीता है या तो लिखता है. तो मैंने लिखा है, किस बात की इतनी दूरी हमारे बीच में, मैं तो आज भी हमारी मुलाकातें याद करके मुस्कुरा देता हूँ. वो मुस्कान जिसमें सिर्फ इकरार है, और वो इकरार जो सिर्फ तुम्हारे लिए है. उन नफ़रत के निगाहों से ना देखो हमें, इकरार तो तुम भी करती हो, बस हालात ने हमें रोक दिया, दूर कर दिया और रुला दिया. मुझे अब इस इश्क पर भरोसा नहीं, पर सुनो, अगली बार नज़रें मिले तो मुस्कुरा ज़रूर देना, मेरे लिए नहीं तो इन निगाहों के लिए सही. अब इंसान क्या होता है, अपना ऐसा कुछ लिख दिया तो लगता है ओ माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने, इतना प्यार कर रहा हूँ उससे. तो लिखा है उस पर, उनकी एक नज़र के सहारे हमने पूरी कविता लिख दी. उनकी एक झलकती सुलगती नज़र के सहारे हमने पूरी कविता लिख दी. दुनिया वालों सोचो, अगर वो हमारी फिर से हो जाए तो हम पूरी कविता को अपनी बना लेंगे, अगर वो हमारी फिर से हो जाए. क्राउड में सब बड़े ही लग रहे हैं, मतलब मेरे से तो बड़े ही लग रहे हैं. तो सब ने एक बार प्यार किया रहेगा, सर की शादी हो गई है इधर. तो हार्ट ब्रेक होता है. तो जब प्यार अधूरा रह जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि एक बार शायद और मिल लेते, एक शाम और बिता लेते उनके साथ, तो यादों के साथ ज़िंदगी बिता लेते. थोड़ा हैवी हो गया, ज़िंदगी बिता लेते, बट ठीक है. एक आखिरी मुलाकात का हकदार तो मैं आज भी हूँ, एक आखिरी हसीन शाम का हकदार तो मैं आज भी हूँ. सिर्फ मैं ही नहीं पर तुम भी हो, क्योंकि मुस्कुराती तो तुम भी थी उन हसीन शाम की मुलाकात में. इंतज़ार करूँगा मैं तेरा उसी जगह जहाँ तुझे मेरे उलझे हुए जवाबों से मोहब्बत हो गई थी. हम दोनों के हिस्से की थोड़ी सी मोहब्बत मैंने आज भी इस दिल में छुपा कर रखी है. एक हसीन शाम के लिए इतना मोहब्बत काफ़ी रहेगा मेरी हसना, क्योंकि थोड़ी मोहब्बत तो तेरे दिल में भी छुपी है. एक हसीन शाम का हकदार तो मैं आज भी हूँ. मैं एक हसीन शाम मेरा तुझ पर बाकी रहा, मैं इंतज़ार करूँगा तेरा वहाँ. थैंक यू गाइस. Let's keep it going. काफ़ी प्यार, काफ़ी ब्रेकअप, काफ़ी दर्द है ना. हाँ, अब तो 1.5 साल हो गए. मुझे 1 साल हो गया, मैं फिर भी इधर प्यार की शायरी बोल रहा हूँ. बट जैसे आपने महफिल जमाई है ऐसे, तो मैं भी 2 शेर आपके आगे अर्ज करना चाहता हूँ. कुछ गहरी सोच है लेकिन शब्दों से ना होंगे ये बयां.
कुछ गहरी सोच है लेकिन शब्दों से ना होंगे ये बयां, कुछ अल्फाज है दिल में ना जाने उनको सुनाऊं कहाँ। कुछ गहरी सोच है ना शब्दों से होंगे ये बयां, कुछ अल्फाज है दिल में ना जाने उनको सुनाऊं कहाँ। मुझे तेरा प्यार चाहिए अब, बस मुझे तेरा प्यार चाहिए अब, चल बसाएं एक नई दुनिया, तुम मैं और ना कोई तीसरा वहाँ। थैंक यू। एक और है, एक थोड़ा शरारती है ये वाला, ठीक है, थैंक यू। आओ तुम्हें सुनाए दिल की ये एक बात, मेरे लिए कुछ खास है तो। आओ तुम्हें सुनाए दिल की ये एक बात, जिसके लिए रहना होगा तुम्हें मेरे पास, मेरा हाथ थमाकर तुम चलो मेरे साथ। आओ तुम्हें बताए दिल की ये एक बात, जिसके लिए रहना होगा तुम्हें मेरे पास, मेरा हाथ थमाकर तुम चलो मेरे साथ, फिर मैं बना ही लूँगा तुम्हारी माँ को मेरी सास। Guys, keep the applause going for our next performer, Sara. Keep it going, keep it going, keep it going until she comes on stage. उफ, कुछ ज़्यादा ही नर्वस हूँ और बटरफ्लाइज हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं उर्दू में ज़्यादातर बोलती हूँ, तो अगर कुछ उर्दू के वर्ड समझ ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे किसी को ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि उर्दू प्योर उर्दू थोड़ा और वो फ्रेंडशिप पर बोले थे, तो मैं ये बोलने नहीं वाली थी लेकिन बोल देती हूँ अब। लड़कियों को ना फ्रेंडशिप कभी कभी होती है कि अगर ये लड़के से फ्रेंडशिप करे ना तो वो दोस्त तक ही रहे, वो फ्रेंडशिप एक चाहिए होती है, वरना वो क्या हो जाता है कि लड़का लड़की वाकई में कभी दोस्त नहीं हो सकते, है ना। पर नहीं, ऐसे कभी कभी होता है ना कि लड़का लड़की के हिसाब से देखे जाए। हाँ, तो वो नहीं, उन्होंने जैसा बोले है वैसा होना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ, थक गई हूँ खुद से मैं, कब तक छुपाऊँ ये दर्द मैं। ज़रूरत है एक सच्चे यार की, पर दुनिया है भूखी प्यार की। ये बोझ अब और नहीं उठाया जाता, किसी का दिल अब और नहीं बचाया जाता। दूसरों को जोड़ते जोड़ते खुद टूट गई हूँ मैं, न जाने क्यों इस दिल के आगे हार गई हूँ मैं। थैंक यू। अब एक है, मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी तो नहीं लिखती हूँ, छोटी छोटी 2-3 है। मुझे ज़ीस्त की तड़प नहीं, मुझे ख्वाबों में ज़िंदा रहने दो। दुखों के इस जहान में मुझे उसकी वफ़ाओं में ज़िंदा रहने दो। टूटी कश्ती सा है हमारा मुस्तकबिल, फ़िलहाल मुझे उसका गुरूर ही रहने दो। उसकी बाहों में महफूज हूँ, मुझे वहीं रहने दो। ये 3rd पीस है। मुझे उसे आँखों में पिरोने से डर लगता है, मुझे उसकी आगोश में खोने से डर लगता है। मुझे उसे आँखों में पिरोने से डर लगता है, मुझे उसकी आगोश में खोने से डर लगता है। ख्वाब देखूं तो बस दीदार उसका हो, मुझे उसे हकीकत में खोने से डर लगता है। थैंक यू सो मच। अब ये लास्ट, मोहब्बत क्या है, मतलब आप सबके लिए अलग अलग होगी, मेरे लिए क्या है मैं ये बताती हूँ। मोहब्बत एहसास है जो 2 दिलों को एक दूसरे की आबरू से होता है। मोहब्बत हिम्मत है तो कभी कमज़ोरी, मोहब्बत सुकून है तो कभी सिर्फ उसके होने के एहसास से होता है, तो कभी खौफ है जो उसे खो देने का होता है। खौफ ही तो है जो उस मोहब्बत को मजबूत बनाता है। खौफ ही तो है जो हमें उस आखिरी पहर की दुआ तक ले जाता है। मोहब्बत वो डोर है जो 2 रूहों को एक दूसरे के करीब लाता है। ख्याल है जो सिर्फ महबूब का गुलाम होता है। मोहब्बत आँखों से होती है और दिल में उतर जाती है, फिर वो दिल को काबू कर रग रग में समा जाती है। थैंक यू सो मच। Guys, can we please keep it going for Sara? क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत क्या है, क्या बात है। Let's go around and say, someone wants to give us the definition of love. What is it for you guys? What's प्यार दोस्ती है। हाँ जी, ये समझ के मैंने 7 गिफ्ट भेजे थे। प्यार दोस्ती है। करण जौहर ने बहुत काटा है हमारा। Not done.
मैं ये सोच रहा था तो मैं भी 7 गिफ्ट भेज दिया. प्यार दोस्ती है. Sheesh. Nice one though. Thank you. What about the rest? What is the definition of love, sir? You all are married, no? So, it's like, any other married couple in the audience? Or anyone that's dating? Like, are you guys here with your significant other? Sorry, sir. Correct. I feel for me, yeah, कहना चाहती नहीं आप सुनना चाहती हूँ. Hi. Okay, for me, love is basically being there for her before she even has to tell you that she needs you. Hi. That is beautiful. That is beautiful. Genuinely. That is beautiful. Wow. Love the spirit. Yes, ma'am. लव शायद वो है जो वाकई में शादी तक ले जाता है. Hi. क्या बात है. So it's like a happily ever after. It takes you to the happily ever after. हाँ जी, ma'am. It's vulnerability. Vulnerability. Someone you can be vulnerable around. That's good. That's good. So I love you guys because I'm going to be vulnerable with you all now. I'm serious. I'm going to be talking about a breakup. Obviously mine. I didn't break someone else up. I mean, I might have, but talking about my breakup. So 6 years was the relationship. It was a long time. And I know I'm 24, and when I say 6, you're like 18 saal. I was like, yes. So that was my cognitive years. So it still, kind of stays with me. You get some more pain धीरे धीरे. अब सुनते रहिए अब. But don't worry. Mutual breakup था. We mutually decided कि मैं चूतिया हूँ. तो निकल गया. हंसी है मेरे पेन पे. यही तो काम है. Anyway. So after a breakup, the initial stages, everyone, at least this was for me and my majority friends that I've seen, starts blaming or like finding mistakes. And my ex was like this. That's why we broke up. Or my ex was like that. Why didn't my ex do like this? It could be girl or guy, anyone. Guys, again, girl or guy, anyone, I'm okay with it. I'm not favorizing that girls do this or guys do this. Don't come at me. बोलना पड़ता है आजकल. क्या करूँ? Anyway, so everyone, kind of talks about how the ex were. So I wrote a poem after I did all that blaming. I decided, let me introspect within. Where could I have done better in the relationship? What could I have changed about myself, or what could I have been more concerned about her thoughts and needs? So I wrote a poem titled Introspecting Within. So I hope you guys enjoy my misery. So yeah, it's misery. I saw her waiting for me in the storm, in the rain. But all I ever did was I caused a grief and I caused a pain. She was the one who never left my side when I was down. The one who could actually pick me up from the ground. How was I so blind to see that she was just trying her best to be there for me? Did I ever stop and think twice? Or was I caught up in my own mind and now I'm paying the price? I regret not telling her that she deserved the world, but I couldn't bring ours together. I was numb, I was down, and I was broke, no matter how much she tried to pick me up and make me feel better. She went through it all, just hoping that one day I'd understand. One day I'd understand how much she loved me and she just wanted me to be her man. But I became selfish. I became selfish in trying to make my life and my world work out, not being able to understand how her love was all that I needed to get through this drought. The one person who could hear me has now been blocked away and stored in memory. And now there's no one to talk to. Just me alone, drowning in my own misery. Thank you. I mean, and you guys, drowning in my misery with me. But guys, can we keep the applause going? Keep the applause going. Keep the applause going for Charlene. Charlene's right here. Hi guys, I am also a first year student, and today I'm going to be talking about something that I think most of us have gone through when time doesn't support a relationship, when timing is just wrong. And as we said before, तबाही कंटेंट है तो उस पर ही लिखा था. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ, तो ये पोएम स्टार्ट्स ऑफ इन हिंदी एंड एंड्स ऑफ इन इंग्लिश. शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है. कहाँ है हमारी पूरी कायनात? कौन मिलाएगा हमें? मैंने तो हर गिरती पलक पर तेरी दुआ मांगी थी,
तूने भी तो हर टूटते तारे पर मेरी ही ख्वाहिश सजाई थी, तो क्या कमी रह गई हमारे प्यार में? क्यों अधूरी रह गई हमारी ये कहानी? ये वक्त भी ना कितनी कुत्ती चीज़ है, तोड़ कर चली जाती है, पीछे मुड़कर हाल भी नहीं पूछती। हाल तो मेरा कभी तुमने भी नहीं पूछा जाने के बाद। चलो मैं ही पूछ लेती हूँ, मैं ही पहला कदम उठा लेती हूँ। तुम खुश तो हो? मेरी याद तुम्हें ज़्यादा सताती तो नहीं? तुम ठीक तो हो? मेरी खुशबू तुम्हें वापस बुलाती तो नहीं? टाइमिंग, fate, destiny, they say it's a man-made concept. For the longest time, I agreed with them. For the longest time, I thought that there was no right or wrong timing, only right or wrong people. For the longest time, I believed that if you loved someone enough, you can work through anything. But now I see how untrue that is. Because what do we blame it on when every force of the universe is against us being together? Some things are too strange and too strong to be coincidences. No amount of manifestation can work when it just isn't written in the cards for us. No amount of effort can change what's meant to be. Or in our case, what's not meant to be. Things are never easy when time isn't on our side. And as for you and me, timing has always hated us. It has always been the invariable third party in our relationship. You always said that you are the sun and I am your moon. Channa Mereya, remembered? And it makes sense to me now. We are like the sun and moon, always missing each other. But even they got to be together for a short time. And didn't you see what they did when they were together? They lit up the sky, just like we did. They waited for their moment, just like we will. After all, we were never lacking in love. It was never a question of whether we loved each other enough or not. Because if love could fill a whole room, ours would need more space. Ours would have banged open the windows and burst through the doors. But even the greatest of loves cannot withstand the wars of this world. And no matter how much we loved each other, it just wasn't a war we were meant to win. Maybe a few years from now, we'll meet up for coffee and it'll be completely normal. I won't mention the way I still love the color blue on you. And you won't talk about the night you had begged me to stay on call for just a little while longer. I can imagine it already, looking you in the eyes for the first time in years. And I bet that just like back then, there would be so much love in our glance. And yet somehow, the timing still wouldn't be right. It seems that's how it'll always be for some people. Just like thunder and lightning, the timing will always be just a little bit off. I always thought that our love would fill pages, that our love would have vast chapters, that I'd have vast chapters to tell the story of our love. But all we got was a few pages. So tell me, that if the story of us is the shortest I've ever read, why is it still my favorite? Why do I still run my hands across the words and wish that there were so many more? Hopefully, one day I'll figure out how to close this book, our book. Timing or no timing, you'll always have a room in the corridors of my heart. Thank you. Guys, keep it going, keep it going, keep it going, keep it going, keep it going. That was beautiful, man. What are you doing in first year? I'm doing a BMS in capital markets. BMS in capital markets. So when you say first year, you're like 18, 19? Yeah, I'm turning 18. Oh, you're turning 18. Already इतना? आगे जाके तो जैसे सचिन सर ने बोला बहुत कटेगा. Damn. Wow. Yeah, I think I've seen this happen a lot around me. So I have a 13-year-old sister, okay? And
her class also something like this only. Yeah, this boy has really broken my heart. Arey bro, you're 13. What do you know about love? Like, पहले बड़ी तो. Like, I know I'm an overprotective brother and all, but it's not her only. It's like, Pagod, her classmates and everything. Like, what is happening with this generation? I'm scared. And I say this generation because I sound old. I am old, dude. Like, I feel old. I was on bed rest for 1 week because I had a back spasm going go-karting. मैं गिरा भी नहीं. मैं गाड़ी चलाया. थोड़ा लो होके. So I didn't go to office, dude. Like, my back was, I had to go get an X-ray done and everything because they thought I dislocated a bone because it was that bad. And that's why I don't go out to like theaters anymore, bro. Like, anyways, इतना पैसा popcorn कौन भरेगा? OTT पे बैठ के मस्त सारे channels के subscriptions लो, chill करो घर पे. फिर भी ads आते हैं Hotstar पे. Netflix भी start कर रहे हैं ना ये, I think ads after. क्यों पैसा दे रहे हैं फिर? Ad blockers. Biggest ad blocker I think was Brahmastra, bro. Like, that only. That was one movie I'm glad I didn't pay for. We're talking about red flags. That movie started with a red flag, guys. First scene, I just watched it half because I couldn't watch the entire thing. First scene, Isha meets Shiva, he gets invited to a party. He says, no, I have to go for another one. She's like, ठीक है, जा. मैं नंबर नहीं दे रही. क्यों? Because you didn't invite me. Fuck, that's the biggest red flag. भाग. You started off toxic. Like, bro, you just met her. क्या हो तुमने? क्या हूँ मैं? पूछ. चूतिया है तू गधे. भाग वहाँ से. Button. He pressed wrong buttons for me, bro. I didn't even get to that part. It was that bad, dude. But yeah, this generation. I'm not saying this generation only. Like, I think we're at a time in the year only, guys. Like, we're at a time in the year, saal khatam ho raha hai. We're at a time in the year where everything is, we're surrounded by change, right? Seasons are changing. People are starting new jobs. Students are graduating high school and college, like shutting an important chapter in their lives while embarking on a new journey to go chase their dreams. And no matter what you've done this year, thinking about it can be daunting. It's okay. It's okay to feel that way. It's okay to take it a day at a time or set plans for the future. Choose your own path, because as long as you keep going, you'll feel proud of yourself. You'll feel proud of growing from who you were yesterday. You'll be excited about who you will be tomorrow. But most importantly, you'll be happy about who you are today. Don't worry about, because change is the only thing that's constant in life. That's one thing that's never going to change, right? And I think on that note, we should give me a bit of an applause. Yes. Because I'm the host and I can ask to do this. So I'll take some advantage. Keep the applause going for our next performer, Viraj. Guys, keep the applause going until Viraj comes on stage. They've just gone to the washroom, bro. आ जाएंगे. Bro, we have to go on. No, we have another show next. Sorry. Guys, keep it going for Viraj. जी नमस्कार, मैं विराज नायक और आनंद के नाम से गज़ल शायरियाँ लिखता हूँ. तो मैं भी सूरत से आया हूँ वहाँ, और आपकी जितनी तालियाँ आती रहेगी उतनी यहाँ से शायरी आती रहेगी, ठीक है? तो एक गज़ल से शुरुआत करूँगा कि अगर ज़रा भी शक है तो मेरा इम्तिहान ले लो. अगर ज़रा भी शक है तो मेरा इम्तिहान ले लो. ये दूसरों से क्या पूछते हो, तुम मेरी ज़ुबान ले लो. ये दूसरों से क्या पूछते हो, तुम मेरी ज़ुबान ले लो. मेरी सारी परेशानियाँ तुम्हें मालूम हो जाएगी. मेरी सारी परेशानियाँ तुम्हें मालूम हो जाएगी. तुम सिर्फ एक दिन के लिए मेरा मकान ले लो. तुम सिर्फ एक दिन के लिए मेरा मकान ले लो. और यूँ कब तक अपने मालिक के यहाँ नौकरी करते रहोगे? यूँ कब तक अपने मालिक के यहाँ नौकरी करते रहोगे? थोड़ी हिम्मत करके अब खुद की दुकान ले लो. अब थोड़ी हिम्मत करके खुद की दुकान ले लो, और तुम्हारी जीत और भी आसान हो जाएगी. तुम्हारी जीत और भी आसान हो जाएगी. तुम सामने वाले खेमे का कप्तान ले लो. कि तुम सामने वाले खेमे का कप्तान ले लो. शुक्रिया. एक और गज़ल पेश करता हूँ कि तमन्ना है
कि एक दिन तू मेरे संग हो जाए, तमन्ना है कि एक दिन तू मेरे संग हो जाए, ये देखकर मुझे देखने वाले दंग हो जाए, कि ये देखकर मुझे देखने वाले दंग हो जाए, और तेरे सिर्फ एक इशारे पर तो, कि तेरे सिर्फ और सिर्फ एक इशारे पर तो मेरे सारे रकीबों से ऐलाने जंग हो जाए, कि मेरे सारे रकीबों से ऐलाने जंग हो जाए। और शेर है कि बड़े अरसों के बाद आज पाया है तुझको मैंने, बड़े अरसों के बाद आज पाया है तुझको मैंने, मेरे हाथों से तेरे माथे पर लाल रंग हो जाए, कि मेरे हाथ से तेरे माथे पर लाल रंग हो जाए, और खुशी के इस बेहतरीन मौके पर आनंद, खुशी के इस बेहतरीन मौके पर आनंद, आसमान में उसके नाम की एक पतंग हो जाए, आसमान में उसके नाम की एक पतंग हो जाए। तमन्ना है कि एक दिन तू मेरे संग हो जाए, ये देखकर मुझे देखने वाले दंग हो जाए। शुक्रिया। एक आखिरी गज़ल कह के मैं अपनी जगह लूँगा कि मैं मतलब ही भूल गया कि नहीं याद है, हाँ ये ताज़ी लिखी है इसलिए थोड़ा, कि साफ हवा में सांस लेना अब ख्वाब होता जा रहा है, साफ हवा में सांस लेना अब ख्वाब होता जा रहा है, शैतान अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है, कि शैतान अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है। ये ज़मीं ये आसमां एक है खून सबका, ये ज़मीं ये आसमां एक है खून सबका, फिर भी क्यों यहाँ हर चीज़ का हिसाब होते जा रहा है, फिर भी क्यों यहाँ हर चीज़ का हिसाब होते जा रहा है। और कई घंटों से बैठकर मैं देख रहा हूँ तालाब में, कई घंटों से बैठकर मैं देख रहा हूँ तालाब में, वो एक कांटा अपने आप में गुलाब होते जा रहा है, वो एक कांटा अपने आप में गुलाब होता जा रहा है। मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है कि मैं जैसे 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 पास जा रहा हूँ उसके, मैं जैसे 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 पास जा रहा हूँ उसके, वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता लाजवाब होता जा रहा है, कि वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता लाजवाब होता जा रहा है। और डाल दी है गिलास में 2-4 बर्फ़ के टुकड़े भी, और डाल दिए हैं गिलास में 2-4 टुकड़े बर्फ़ के भी, अब वही बर्फ़ अपने आप में शराब होता जा रहा है, अब वही बर्फ़ अपने आप में शराब होता जा रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। Guys, give me a huge round of applause, sir. क्या बात है सर, क्या बात है सर। गज़लें मेरे से लिखी नहीं जाती यार। आई रियली एम जेलस ऑफ द पीपल दैट राइट। ट्राई कर रहा हूँ मैं, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने इतने अच्छे से शराब के बारे में बात की है, कि इतनी अच्छे से शराब, आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स यार। लाइक I've never heard someone describe it like that. It was beautiful, and that's why I'm jealous of people that can write in Hindi. Like Sharab also, they make it so beautiful. Yeah, wow! Huge round of applause, sir. Thank you. So we're halfway through. How are we feeling? Good. Good. Yeah, you still with me? You still with me? You still with me? We got just a few more performers. I'm also not going to take up majority of your time. You guys might be tired of seeing my face by now, I'm assuming. But try to keep the energy. I'm going to try matching. See, my energy will match your energy. I can dance all day. Like I said, I was a hyper kid in school. I'm a hyper kid now. I can have the energy like this until 9 in the night. That's not an issue. But you guys also need to kind of reciprocate. The artists are coming on stage. They're performing their poetry. And it's good. It's good. I love this audience. You guys, sir, you've been great. People at the back have been so interactive. I'm loving it. But I'll call the next performer, and you guys know what to do. You guys know what to do. Keep clapping. Keep clapping. Keep clapping. Keep clapping for Mr. Bhupendra Singh. थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं अपन। बहुत सारे लोगों ने इश्क पे बातें की यार, मतलब मैं को सुन के ऐसा लग रहा था कि आए हाय हाय कितना जल्दी बेवफा का टैग हम खुद को दे देते हैं या फिर अगले को दे देते हैं।
एक बहुत पुराना शेर है कि शेर में शोहरत है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये शोहरत नहीं है। इसको मोहब्बत से रिप्लेस कर सकते हो कि तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी मोहब्बत नहीं है। होता क्या है कि प्यार से हम आगे निकल आते हैं ना, तब हमें पता चलता है नहीं भाई, दुनिया में बहुत सारे दुख हैं जो अभी तक हमने फेस नहीं किए हैं। हम अभी तक अटके हुए हैं वही बाबू सोना के अंदर। शायद कुछ अच्छे वर्ड दे दिए हों हमने, बाबू से निकल के बेबी पे आ गए हों। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। वैसे ही साहिर लुधियानवी जी ने एक गीत के अंदर लिखा था, हज़ारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। हम प्यार से निकल के एक दूसरी तरफ, एक और मौजू की तरफ बात करेंगे। अभी अपन देखते हैं न्यूज़ चैनल कोई भी अगर आप ओपन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सी गवर्नमेंट, मतलब कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही होगी इसको। हमारे पर्सपेक्टिव बदल गए हैं, बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं। राइट विंग लेफ्ट विंग भी अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया है। ये पोएम है जिसके अंदर, क्योंकि बीच में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि कुछ लोगों को ऐसे ही जबरन पीट दिया गया। कविता है कि राम नाम का मतलब क्या जब पुण्य भरी ही त्वचा नहीं, राम नाम का मतलब क्या जब पुण्य भरी ही त्वचा नहीं, जब वर्तमान में सत्य राम का कण भर भी कहीं बचा नहीं। जहाँ राम रूप में, राम नाम का मतलब क्या जब पुण्य भरी ही त्वचा नहीं, जब वर्तमान में सत्य राम का कण भर भी कहीं बचा नहीं। जहाँ राम रूप में बैठे दशानन पग पग पूजे जाते हों, जहाँ लेकर हरि का नाम युद्ध में नकली बंदर जाते हो, जहाँ व्यक्ति बजरंगी से बढ़कर भक्त बना मंडराता है और राम बने बैठे रावण को ही फिर धोख लगाता है। जहाँ झूठ रोजाना टीवी पर सच्चाई को झुठलाता है और लंका कहकर आग राम की कुटिया में लगवाता है। जिस नाटक की पटकथा है बिल्कुल विपरीत असलियत से, जिसके सारे संवाद लिखे सत्ता ने अपनी नीयत से, जहाँ होगा बिल्कुल वैसा ही जैसा एक रावण चाहेगा, उस नाटक का मंचन होगा तो केवल भ्रम ही आएगा, कोरा भ्रम ही आएगा। इसी के एक मौजू में कविता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत, कितने लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि इस दुनिया के बाद जन्नत है या स्वर्ग है? कितने लोग हैं जो बिलीव करते हैं यहाँ? अब आप ये देखो कि जन्नत की जो हमारी डेफिनेशंस हैं वो इससे जस्ट कितनी अपोजिट आती है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि भैया अर्थ पे भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। और जन्नत की भी जो डेफिनेशन है ना, आप देखोगे कि वहाँ पे एग्जैक्ट वही चीज़ें बताई जा रही कि शराब की नहरें बह रही हैं, थोड़ा सा एग्जेजरेशन जो हम कर रहे हैं पोइट्स वगैरह। धर्म के घन चक्करों ने पथ बनाया क्या भला, उल्टे पैरों से सिखाते दूर जाने की कला। जिस तरफ जाना उधर है पीठ पर आंखें नहीं, और कहते गर्व से तकनीक चलने की सही। इस तरह के लंपटों के ज्ञान को झंझोड़ना और आवश्यक है झूठे पात्र को खंकोलना। संग इनके जब मनु उल्टी दिशा में जाएगा, पीठ को आगे कहेगा गर्त में ही जाएगा। जी रहे गति रोक कर केवल विरोधाभास में, और धरती पे जो ना छुआ मिल जाएगा आकाश में। आज तक मुल्ला जी दोहराते रहे एक बात को, दूर दारू से रखो हम मोमिनों की जात को। मदह वर्जित बोलती है पुस्तकें अपनी कहो, और नहरें बहती है जन्नत में मदिरा की अहो। इस तरफ बैठे मुनि यूं मौन अद्भुत ओढ़कर, अप्सरी की कामना करते हैं नारी छोड़कर। स्वर्ग में भी नारी जैसी अप्सरियों के साथ हैं, सोना चांदी हीरे तो पृथ्वी के पदार्थ हैं। क्या ही अंतर हो गया जब कामना छूटी नहीं, इस धरा से उस धरा की लालसा छूटी नहीं। जिंदगी भर आदतें जो झेप ली क्या जाएगी, चाहे जाओ स्वर्ग में पर पीछे पीछे आएगी। इस तरफ छूना भी समझा पाप जिसको उम्र भर, उस तरफ कैसे अचानक छू लोगे
मन मोड़कर, बूंद भर से डरने वाला क्या नदी को जाएगा, एक पल का चूर मानव गुण सदी के गाएगा, जिसको सोना भी न आया ठीक से गई रात में, आंख मलता ही दिखेगा किरणों की बारात में। जीभ पर अमृत का सा एहसास होना चाहिए और धरती पर ही स्वर्ग का अभ्यास होना चाहिए। शुक्रिया। Let's give a huge round of applause, Mr. Bhupendra Singh. You guys are great audience, man. Like, you guys are fantastic. You guys have kept the energy going. We just got a few more performances before let you guys go, and you guys can do whatever you all want for the rest of your Sunday. You guys can go chill out. I'm not gonna keep you all here till like the bell is gonna ring. The bell doesn't dismiss you. I dismiss you. But no, I'm kidding. There will be a bell because we've got a show after this. So anyway, how are we doing? We're doing still good so far? Good so far? शायरी सुनोगे? Of course, प्यार है भारी. It's obvious. मुझे देखो कौन प्यार करता है, तो मैं प्यार पे लिखता हूँ. तो अर्ज़ किया है. Thank you जी. तेरी सूरत इतनी सोनी हर दीवाना तुझ पे मरता है. तेरी सूरत इतनी सोनी हर दीवाना तुझ पे मरता है. एक नज़र मुझ पे भी तो डाल पगली, ये मजनू भी तुझे दिल की बात कहने से डरता है. Thank you. वादे किए थे कि तेरे नज़रों में बनूंगा मैं एक दिन काबिल कभी. वादे किए थे कि तेरे नज़रों में बनूंगा मैं एक दिन काबिल कभी. मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, बस तेरा साथ ही है काफ़ी अभी. तेरा साथ ही है काफ़ी अभी. Thank you guys. Thank you guys. Keep the applause going. Just a few more. You guys set the level here. Guys, please keep the applause going and welcome on Preeti. Keep it going until she comes on stage. मैंने तो बहुत सुन लिया है. हेलो गाइस, मैं प्रीति यादव और मैं शुरू करती हूँ. मैं हिंदी में कविताएं लिखती हूँ, तो वही सुनाऊंगी मैं. दुनिया की इस भीड़ में अपना तो किस्सा छोटा है. दुनिया की इस भीड़ में अपना तो किस्सा छोटा है. हंसते गाते इन चेहरों में कौन किसी का होता है. क्या बात. फिर इसके आगे एक छोटा सा ख्याल है कि परिस्थितियाँ कोई भी हो सब बदल जाया करती हैं. मोहब्बत हो या नफ़रत आखिर ढल जाया करती हैं. प्यार की थपकियों में परेशानियाँ घुल जाया करती हैं. गोद में रख लो सिर माँ के, यहाँ जन्नत मिल जाया करती है. बहुत बढ़िया. अब इसके आगे मैंने माँ पे लिखा है कि माँ तुम तो सब दिला देती हो, मेरा बचपन दिला दो ना. फिर से वहीं धीमी लोरी सुना के अपना आंचल उड़ा दो ना. माँ मुझे मेरा बचपन दिला दो ना. अब चैन मिलता नहीं दिखावे के प्यार में, अब लोग तो नेह भी बांटने लगे हैं उधार में. मुझे अपने सीने में लगा लो ना. माँ मुझे गहरी नींद में सोना है, मुझे फिर से सुला दो ना. अब जगने पर कुछ पता नहीं चलता, कोई घर में भी है पता नहीं चलता. वो पायल वो चूड़ी पता नहीं चलता, कब बढ़ जाती हैं रिश्तों में दूरी पता नहीं चलता. मेरा हाथ थाम मुझे फिर से उठा दो ना. माँ मैं अक्सर गिर जाती हूँ, मुझे फिर से चलना सिखा दो ना. माँ मुझे मेरा बचपन दिला दो ना. अब रूठने पर कोई मनाने नहीं आता, भूख मर जाती है. अब पूछ कर कोई खाना खिलाने नहीं आता. कितना कुछ टूटा है कितना भरना बाकी है, अब जख्मों पर कोई मरहम लगाने नहीं आता. माँ मेरे बालों में फिर से हाथ फिरा दो ना, मुझे गहरी नींद में सोना है. माँ मुझे फिर से सुला दो ना. जो हाथ हरदम थाम लिया करता था, जो हाथ हरदम थाम लिया करता था. छोटी मैं हूँ जो नाम लिया करता था. एक दरार सी पड़ आई है, भाई के साथ जाने किसकी बहन आई है. वो राखी के 10 रुपये लौटा दो ना, मेरा छोटा भाई मुझे दिला दो ना. माँ तुम तो सब दिला देती हो, मुझे मेरा बचपन दिला दो ना. अभी मेरे पास टाइम है तो कुछ और भी है मैं बोलना चाहूँगी. सबका दिल टूटा है, ऑब्वियसली मेरा भी टूटा ही होगा. उस पे मैंने लिखा था कुछ. एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं जिसके साथ थी वो बिना बताए ही चला गया.
बाद में हमारे कुछ टाइम तक हमारी बात ही नहीं हुई, और जब हुई तो पता चला वो किसी और के साथ है। तब ज़्यादा बुरा फील होता है कि एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि आप जा रहे हो। तो वो उस पर मैंने कुछ लिखा है कि वो आए और गुजर गए, कि ये वादों से अपने मुकर गए, हम बैठे रहे इंतज़ार में उनके, वो बचकर हमसे निकल गए। और इसके बाद है कि गम ये हाल है मेरा, दिले बेचैन रहता हूँ, मैं रस्तों में फिरा करता, कहाँ मैं घर में रहता हूँ। और उसके आगे है कि मुझे आदतन जख्म छुपाना आता है, मुझे आदतन जख्म छुपाना आता है, अब दर्द में भी मुस्कुराना आता है। बदनसीबी इतना तपा चुकी है मुझे कि अब हर सांचे में ढल जाना आता है। बस, थैंक यू। Guys, keep it going, keep it going, keep it going for Miss Preeti. मैं कुछ सोच रहा था अभी, बहुत सोचता हूँ मैं, बहुत टाइम है मेरे पास, कुछ ज़्यादा ही वेल रहा हूँ मैं लाइफ में। सोशल मीडिया करता हूँ यार, और क्या। call that a job or what? बहुत वेल रहा हूँ लाइफ में, एंड मैं अभी यही सोच रहा था, आई थॉट आई शेयर समथिंग विद यू गाइस। प्यार की बहुत बातें होती है राइट अभी, एंड प्यार में पढ़ने वालों की बहुत बातें होती है। And I realize that जब लोग प्यार में होते हैं, when people are in relationships, and when I say relationships, I don't mean just, I don't want to term it as just romantic relationships. It could be even someone special to you in like a platonic way, in like a friendship way, right? So हम कुछ भी कर देते हैं उनको impress करने के लिए. So we get so caught up by trying to impress the people that live around us. We forget to impress the person living within. And the person, हाँ तालियां बजाएं, चलेगा. Thank you. And the person living within is who creates memories, you know. जैसे आपने कहा प्रीति जी, बचपन में वही तो हमारी यादें होती हैं। तो we used to, like बचपन में we used to go out to cafes, we used to fight with who's going to pay. We used to find a million reasons to do things for our friends by going out of our way. Life was much simpler back then when we had friends with dreams that we all wished just came true. We didn't worry about what the future held. We just took the days as they came, not realizing when we were left with just a few. And that's the beauty of our childhood, right? We never worried about having to impress someone we didn't know. लोग क्या कहेंगे, ये हमारे दिमाग में था ही नहीं। तो अपने आप के बचपन के लिए एक ज़ोरदार तालियाँ। You guys, I'm sure you guys might have had, like, बचपन में सब खेले होंगे, right? दोस्तों के साथ या भाई बहन के साथ, and वो दिन ही कुछ और होते हैं। We wish we could go back to those days. And I sound very old when I say that. And I have to keep telling myself, Arsh, you're 24. दिमाग में 50 साल का होगा, लेकिन तो अभी भी 24 साल का है. But you guys have been fantastic. We just got a few more performances left. We'll call on the next act. And before I call on the next act, he's been the most energetic person in this house. And I'm a fan. I'm sure you guys have seen him as well. So keep the energy where you all started. Can we see it where we started? Keep it going, keep it going, keep it going for Mr. Arya Babbar. Thank you so much. Okay, thank you. मुझे पता नहीं मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, but thank you so much. आपने इतना प्यार दिया. And you can, I don't mind. Okay, I'm doing this for the first time. Okay. Thank you. And ये एक्चुअली ये जो रिकॉर्ड करने वहाँ बैठे हैं, इनका नाम मानव है। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनको मैं प्यार से मूर्ख मानव भी कहता हूँ। और मूर्ख मानव जब भी मेरे आसपास रहते हैं, कोई मूर्खता ज़रूर होती है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ था कि हम ट्रैवल कर रहे थे, और मेरा एक अंदाज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा जोक्स करता हूँ, बहुत ज़्यादा मजाकिया किस्म का इंसान हूँ मैं। तो कुछ जोक वो कह दिया था जो किसी को पसंद नहीं आया था, एंड उसके बाद वो चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो गई थी ज़िंदगी में मेरे। तो उसके बाद मैंने सोचा बहुत कुछ, तो मुझे समझ में आया कि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कुछ ज़्यादा ही जो होता है ना, हाँ आप समझ गई हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, है ना कहीं बड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं जोक्स को लेके। थोड़े से मतलब देखा जाए तो ऑस्कर में भी पता चल गया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, है ना। मैंने तो ये भी सोचा था कि पहले मैं चलो उस तरीके का मजाकिया जो हूँ, पहले आके कुछ कॉमेडी का करूँ। फिर मुझे याद आया था, मैंने कहा नहीं, पहले पोइट्री के लिए आके करता हूँ। थोड़े आप लोग थोड़े सॉफ्ट किस्म के लोग होंगे, 2-4 बार सोचेंगे आने से पहले। सो थैंक यू सो मच।
So I'm starting this. This is kind of a satire. Please enjoy it. It's called Very Good Bandar. जी बिल्कुल. समझ में नहीं आता कहाँ चला गया मेरे देश का सेंस ऑफ ह्यूमर. रूमर बन के रह गया. कभी था भाई. हाँ भाई हुआ करता था. क्या? अरे सेंस ऑफ ह्यूमर. अरे क्यों मजाक कर रहे हो मियाँ तुम मुसलमान हो? नहीं मैं इंसान हूँ. अबे जात क्या है? मर्द जात है. वेरी कुत्ती जात. हाँ भाई क्यूटी पाए तो हम हैं. अरे क्यूटी पाए सर माइंड क्यों कर रहे हैं? आप भी क्यूटी पाए हैं. अरे पहले डिसाइड करो, इरिटेट ना करो. क्या डिसाइड करूं और क्या ना करूं? अरे भुला दिया. मैं कहाँ था? ब्रदर आप वहाँ थे और मैं यहाँ था. ब्रदर क्रिश्चियन हो? सीरियसली? क्या सीरियसली? सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ गया? एंटी नेशनलिज्म में मिसल पाव बन गया और इंटॉलरेंस में बॉयकॉट हो गया. एक मिनट, ये कविता है, प्रोज है या फूड रिव्यू है? हैं? वो सब छोड़ो. हैं? मेरी बात समझो और पल्ले बांध लो. एक मिनट, समझूं या पल्ले बांध लूं? What can thou do better? Nothing. जय माता दी. अरे क्या कर रहा है यार? मरवाएगा क्या? क्यों? अब मैंने क्या किया? अरे मियाँ ब्रदर और जय माता दी सब साथ साथ. हाँ तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसे ही बड़ा किया. क्या? सब कुछ. अबे कोई माइंड कर जाएगा. चुप कर. चुप हो गया. नोट करें. फ्लाइट में चुप. पब्लिक में चुप. ट्विटर पे चुप. पॉलिटिक्स में चुप. सॉलिड चुप. इंस्टा फेसबुक चुप. हाँ भाई चुप. कुछ भी हो तू मत मारना. क्या? जोक. क्यों? क्योंकि हर कोई है खफा होने के लिए तैयार, बुरा मानने के लिए तैयार, समझते हुए ना समझने के लिए तैयार, जस्ट चिल से नहीं पर चिल्लाने के लिए तैयार. शांत मुद्रा की जगह क्रोध मुद्रा में तैयार, हर नीति में अपनी नीति मनवाने के लिए तैयार. दूसरा गलत है, मैं सही हूं, बस ये कहलाने के लिए तैयार. इंसान में इंसानियत नहीं, धर्म में मजहब ढूंढने के लिए तैयार, अच्छाई नहीं बुराई ढूंढने के लिए तैयार, प्यार की जगह नफरत के लिए तैयार, हंसने की जगह रोने के लिए तैयार, मुस्कुराने की जगह मायूस होने के लिए तैयार. तो क्या किया जाए? 3 बंदरों के साथ एक और बंदर ऐड किया जाए. क्या? बंदर? हाँ बंदर बे. कैसा बंदर? जो ना हंसता हो, ना कोई भाव दिखाता हो, बस चुपचाप नजरें नीचे कर जीता हो. हैं? अरे पर हंसेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? मुस्कुराएंगे नहीं तो खिलेंगे कैसे? और 2 दिल मिलेंगे नहीं तो खुश रहेंगे कैसे? चुप बंदर, मैं मदारी हूं, मैं ही तेरा मालिक हूं. बोल जी मालिक. जी मालिक. मैंने कहा नजरें नीचे तो नीचे. जी मालिक. तू अब ना हंसेगा ना हंसाएगा. जी मालिक. अब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही रहेगा. जी मालिक. नजरें नीचे. जी मालिक. मुस्कुरा मत. जी मालिक. नो भाव. जी मालिक. स्ट्रेस ले. जी मालिक. भूल जा खुश रहना. जी मालिक. पक्का भूल गया. जी हाँ मालिक. ठीक है, अब सुना कोई चटपटा सा मजेदार सा जोक. जोक? वो क्या होता है मालिक? वेरी गुड बंदर. वेरी गुड बंदर. थैंक यू. And thank you for giving me this opportunity to come over here and narrate it to all of you and this platform. Thank you so much. I really appreciate it. Guys, can we have a huge round of applause for Mr. Arya Babbar? Thank you, sir. Not only were you a great audience member, you were a great performer as well. And first time, sir, you said it, right? That was brilliant, sir. First time in that. Sir, huge round of applause, yeah. And you spoke about something that people are scared to talk about, and in a very, very well put manner. It was, if you guys are still offended by that, just switch your laptops. Yeah. Like, I'm talking to the cameras, people that are watching. If you're still offended by that, just switch your laptops and go home. And if you're home, then throw your laptop. To not quote Anu Malik, आप मुंबई में नहीं रह सकते. But how are you guys feeling the vibe? Awesome. You guys like it? Great. Do you guys like poetry open mics? Do you guys enjoying it? People who've come for the first time?
So we have another event. Now that you all said you'll like it, we have another event called Creative Block Party that happens every Wednesday. It's not like an open mic. It's where curated performers come. Habitat calls them, and it's free to watch. So you guys can go on Insider or book my show. It's a great lineup every Wednesday. Sometimes we even have Mushaira nights where we get famous shairs to come and narrate their shairis. And it's an experimental stage for people to try out some new material, try to see how they're doing, and just have some fun. It's a free show to attend. It happens at Above the Habitat every Wednesdays. Tickets, quote unquote tickets, are on Insider Book My Show. You guys can just check that out, or you guys can check the Instagram story at Habitat, and there's like a Google form link where you can just type out your RSVP and show up. It's a lot of fun. We have storytellers, we have poets, we have musicians that come and try out stuff. So it's a lot of fun. You guys can check that out. But now we've got the last 3 performers. So I love your energy. You guys, it's almost 4. And you guys have kept the energy going on a Sunday afternoon. And you guys do realize tomorrow's a Monday. याद दिला दिया. वो उसी को तो भूलने आए थे हम यहाँ पे गधे. क्यों याद दिला रहा है? देख मैं जॉबलेस, ठीक है, और प्रॉब्ली सून आफ्टर दिस वीडियो जॉबलेस. देखते हैं क्या होता है. बट या सो आर वी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट एक्ट? मैं ऐसे नहीं बोला रहा. Keep it going, keep it going, keep it going for Saloni. Keep it going until she comes on stage, guys. You guys have been fantastic so far. Wow, I'm really short. Hi, I'm Saloni. I'm doing this after a long time. I did this before COVID, and then COVID happened, and then I was not in Bombay. And then I came to Bombay, and it felt slightly weird than how it was before I went back. So this is a small piece based off of that. I hope you enjoy. मैंने नींद नहीं देखी, तुमने चांद नहीं देखा. ये घना शहर है, बड़े दिनों से आसमान नहीं देखा. शीशे में कोई कहता है कहाँ छोड़ आए हो मुझे. शीशे में कोई कहता है कहाँ छोड़ आए हो मुझे. ऐसा तो पहले कभी कोई इल्ज़ाम नहीं देखा. मैंने नींद नहीं देखी, तुमने चांद नहीं देखा. अपने आप की खुदगर्जी में सिमटे हर इंसान को भी. अपने आप की खुदगर्जी में सिमटे हर इंसान को भी मैंने बेबस सही मगर हैरान नहीं देखा. ये घना शहर है, बड़े दिनों से आसमान नहीं देखा. ये आखिरी शेर है इसका. YouTube लाइव बंद कर दो यार. मंदिर और मस्जिद की दीवारों में बंद हो. मंदिर और मस्जिद की दीवारों में बंद हो. तुमने भूख नहीं देखी, मैंने भगवान नहीं देखा. ये घना शहर है, बड़े दिनों से आसमान नहीं देखा. This was one. The other one is dedicated to somebody who is sitting in the crowd. I won't point them out, but yeah. So this person is really special to me, and I thought I'll do a dedication because I have some time. So yeah, this is called किताब. छुपा कर रखा जिसे मेरा एक सहमा हुआ सा ख्वाब हो. छुपा कर रखा है जिसे मेरा एक सहमा हुआ सा ख्वाब हो. शायद मिल जाए कभी वो थोड़ी महंगी सी किताब हो. न कीमतों न तालियों का गुरूर है मुझे. न कीमतों न तालियों का गुरूर है मुझे. मेरे किरदार के करीब बस तुम ही एक किताब हो. शायद मिल जाए मुझे कभी वो थोड़ी महंगी सी किताब हो. समेटूं कैसे मैं तुम्हें, समेटूं कैसे मैं तुम्हें, तुम इंद्रधनुष भी हो और धूप भी. समेटूं कैसे मैं तुम्हें, तुम इंद्रधनुष भी हो और धूप भी. मेरा खिलखिलाता बाग भी हो और तुम ही उसका गुलाब हो. शायद मिल जाए कभी वो थोड़ी महंगी सी किताब हो. आई एम प्रिटी श्योर दिस पर्सन इज क्रिंजिंग, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. लव्स क्रिंज. बहुत सवाल थे मेरे अपने आप से उलझते. बहुत सवाल थे मेरे अपने आप से उलझते. मेरे हर सवाल का जैसे बेसबब मिला जवाब हो. शायद मिल जाए मुझे कभी वो थोड़ी महंगी सी किताब हो. थैंक यू एवरीवन. Guys, keep it going for Saloni. Brilliant, brilliant. So sweet. कॉलेज में बहुत किताबें महंगी होती है ब्रो, राइट? तो इसी से इंस्पिरेशन ली. क्या बात है. You gone to Crossroads? अरे तो वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए मैं किताबें पढ़ता ही नहीं. पैसे बचाओ. इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट स्मार्ट और आई डोंट वांट टू रीड. पीपल यूज्ड टू थिंक माय पेरेंट्स लाइक किताबें पढ़ते हैं. आपके पैसे बचा रहा हूँ. पता नहीं 2000 की 500 पेज की किताबें बिकती है. 4 रुपये का एक पेज.
कौन क्यों मैच करो उसके देखो हाउ मच या मूविंग ऑन पकड़ा गया मैं देख भाई मैंने PSP प्यार के लिए बेचा था ठीक है और अगर वो देख रही है वो नहीं देखती क्योंकि वो बात भी नहीं करती मेरे से अब क्या करूं यार हंसो चलेगा हंसो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ मैं हंसी अपने सॉरी मैं अपना दुख हंसी में आई कांट टॉक इन हिंदी फक इट आई एम curbing my sadness in this smile. Yes, ma'am. I bought a normal like a PlayStation 4, yes, about 2 years later. But PSP, I was because like I said, I used to live in Canada, so I used to take about 8 flights a year, and they used to all be minimum 9-10 hours. So that's when उसकी अहमियत मुझे पता चली कि मैं कितने पिक्चर ही देखूंगा ब्रो वो भी किसी भी टी लाइक द सेम वंस दैट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर इंडिया में 90s के बाद उन्होंने अपडेट नहीं किया है अपना प्लेलिस्ट मैं बोल रहा हूँ खाना भी अपडेट नहीं किया है वो अलग बात है बट प्लेलिस्ट भी अपडेट नहीं किया है गाने भी नहीं है उसमें ब्रो बट इसलिए मैं एयर चाइना लेता था बट देन पैंडेमिक हिट सॉरी कोविड हिट नहीं ब्रो चाइना से थोड़ा भी दूर रहते हैं इंडिया भी एनीवे दूर ही रह रही है नहीं मैंने कुछ नहीं बोला तो आई यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू बीजिंग क्वाइट अ बिट एंड आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स या लाइक आई रिमेंबर दिस वन टाइम I wanted to eat, so I used to travel Vancouver, Beijing, Mumbai, and the same way around. It's an 8-hour flight both ways, 8 hour maximum 9 hours. So it was comfortable and a 6-hour layover in the middle that I used to take. Now those 6 hours felt like ever because just having to communicate कि मुझे कॉफ़ी चाहिए मुझे सब कुछ कॉफ़ी के बजाय मुझे दारू मिली है मुझे विस्की तो हाँ मुझे विस्की वॉडका जिन they've given one guy literally got me coffee beans. Like, why are you asking for this? I'm like, bitch, I want you to make it for me. I'm paying you for it. Just give me some coffee. A lot of problems. That's why I was like Air India. But then I realized, देख भाई language barrier की वजह से Google Translate है. We can use Google Translate to go to China, but I'm not talking in Hindi to Air India. Like I'll tell you a true story. I was traveling Vancouver, Delhi direct, 14 hours. ठीक है. तो अब economy में I'm a bit tall. सो यू गैस कैन सी दैट तो मैं क्या करता हूँ मैं वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना इमरजेंसी एग्जिट पे आई पे दैट एक्स्ट्रा मनी एंड आई टेक इट नाउ आई एम सिटिंग इन दिस फ्लाइट एंड दिस एयर होस्टेस कम्स आउट टू मी सर योर एंटरटेनमेंट सिस्टम इज नॉट वर्किंग आई सेड या वी कांट मेक इट वर्क आई सेड इट्स अ 14-hour फ्लाइट सो वी कैन चेंज यू टू अ सीट बट वी वोंट गिव यू लेग रूम आई सेड नो I want a seat with leg room. I've paid the extra money. I want this. So she gets pissed and then she calls ground staff. Now ground staff, this guy, anyone knows Amrish Puri? He would touch his feet. Like that's how old this dude was. Okay. Now this was peak COVID. This was Omicron time. This was 2021 December. I hadn't come home for 2 years because of COVID. So 2019 was the last time I came home, and then 2021. So I was anyways excited and I was anyways frustrated that I've not gone home. And this guy comes and he tells me the most bizarre thing. Sir, you have paid the extra money just for the leg room. I'm like, bitch, I've paid my entire flight ticket as well. His justification was, and I quote, you've paid only for the extra leg room. Why should we give you entertainment system with it? I was as puzzled as you guys. Like, बाबा मैं फ्लाइट सिर्फ वो एक्स्ट्रा दे के नहीं आई हूँ मैंने टिकट खरीदी है पूरी मुझे खाना भी मिलेगा एंटरटेनमेंट मिलेगा एंड लेग रूम मिलेगा so we can't do anything so he put me in an economy seat but 5 hours later I go up to the guy again I'm like bro like go up to the air hostess because that guy dipped he's like bro like I can't do this now air hostess because she couldn't hear me she removes her mask yes sir and I'm like it's peak COVID firstly I'm anyway scared to travel in Air India like I'm pretty sure COVID started from here and they're blaming it on Wuhan right now like 101% but Air India is supposed to be better right now ma'am you're giving me a look do you like Air India मैम यू गिविंग मी लाइक अ जजमेंटल लुक लाइक तू कैसे बोल सकता है एयर इंडिया के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है डू यू लाइक एयर इंडिया डू यू वर्क इन एयर इंडिया ओके थैंक गॉड
नहीं तो कंफर्म करना पड़ता है यार, नहीं तो आई लव एयर इंडिया, भारत माता की जय. I have to stay in the country, guys. I just came back. But anyway, you guys still with me? Last two performers? Yes. Let's keep the energy going. Keep it going, keep it going, keep it going for Mr. Pupendra. Sorry, I got your name wrong. I got it. Satyendra. I am so apologies, guys. Apologies. Satyendra. Let's keep it going, keep it going. Arey, keep it going. Yeah, he's come all the way. And he's a first time performer, guys. Come on. बहुत ज़्यादा तबाही की बात हो रही थी, रुको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही की बात हो रही थी, तो मैंने सोच रहा इतनी देर से कि तुम सबको तबाही तो मिल रही है, मुझे लड़की नहीं मिल रही. सीरियसली मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ. You see, I'm still searching the poem. So I will start. I always start with this share. I have performed 3 times and every time I started with this share. It is like, या तो रिहा कर दो या फिर सर कलम कर दो, या तो रिहा कर दो या फिर सर कलम कर दो, ऐ मेरे संग दिल सनम बस इतना करम कर दो, हुई मुद्दत की जी भर देखा नहीं तुझको, हुई मुद्दत की जी भर देखा नहीं तुझको, अब आ भी जाओ फिर नया कोई सितम कर दो, और सुना है बड़ी काफिर है तेरी तीर सी आंखें, आँख से आई लव आइज, सुना है बड़ी काफिर है तेरी तीर सी आंखें, चलो पलक झपकाओ और मेरा किस्सा खत्म कर दो. चलो फिर तुम्हें याद करते हैं, चलो फिर तुम्हें याद करते हैं, फिर दिल को बर्बाद करते हैं, प्यार पाना नसीब में ना था, प्यार को दूर से आदाब करते हैं. अभी जॉन इलिया का नाम सबने सुना होगा, जिससे थोड़ी बहुत शायरी की है. तो उनका एक शेर है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, जख्मी दोगे जान में क्या. तो ऐसा कुछ मुझे क्या से एंड होने वाला लिखना था, तो लिखा है कि ताल्लुक खत्म हो गया क्या, ताल्लुक खत्म हो गया क्या, अब तुम्हारा जी भर गया क्या, चले जाते हैं गैर बनकर, तुम अब गैर बन गए क्या, और क्या गलत हूँ मैं अब, क्या गलत हूँ मैं अब, वफा भी कोई गलती है क्या. फिर से मैंने बोला था आँख से प्यार है, तो बड़ी कातिल है निगाह तेरी, बड़ी कातिल है निगाह तेरी, तुम ही मेरे कातिल हो क्या. घड़ी अब रुक सी गई है, घड़ी अब रुक सी गई है, तुम सो गई हो क्या, मेरे दिल में बसती है वो, मेरे दिल में बसती हो, मेरा दिल मंदिर है क्या, और तुम्हें तो दिल लगी में डिग्री है, तुम्हें दिल लगी में डिग्री है, तो ये सिर्फ दिल लगी है क्या. और शरीफ तुम मर क्यों नहीं जाते, शरीफ मेरा पेन नेम है, मैं हूँ नहीं शरीफ. शरीफ तुम मर क्यों नहीं जाते, बिन उस जिंदगी में खुशी है क्या. अभी ये कुछ मैंने नया ट्राई किया है, समथिंग लिरिकल, सो आई एम गोइंग टू सिंग, सो यू कैन क्लोज योर ईयर्स. पहले बैकग्राउंड स्टोरी. बैकग्राउंड ऐसा है कि एक कपल है एंड बहुत अच्छा सा मौसम है. ये मैंने बारिश का टाइम लिखा था, तो वो पकौड़े बना दो कुछ ऐसा वाला मौसम है. यहाँ पर लड़की का जो मूड है, लड़के का, वो कुछ अलग है, और लड़की का मूड थोड़ा सा अलग है. तो ये लड़का बोलता है, इसे मौसम बड़ा सुहाना आओ तुम्हें सताएं, मौसम बड़ा सुहाना आओ तुम्हें सताएं, जी चाहता है तुमको हम गुदगुदी लगाएं, जी चाहता है तुमको हम गुदगुदी लगाएं. ऐसा होता है और लड़की छोड़ गया, नहीं छोड़ो, वो जाने लगती है, वो जाने लगती है. तो फिर ये बोलता है कि जाओ ना हमको छोड़ कर ऐसे मिजाज में तुम, ऐसे मूड में मत जाओ, कि जाओ ना हमको छोड़ कर ऐसे मिजाज में तुम, ऐसा मिजाज है कि किस्सा कोई सुनाए. ये तो सिर्फ बहाना है, किसी को किस्सा नहीं सुनाना होता, किसी लड़के को किस्सा नहीं सुनाने होता है. अभी अगला शेर होता है कि आओ कि अपनी गोद में हम तुमको ही बिठाएं. दैट वाज हिज रियल इंटेंशन. आओ कि अपनी गोद में हम तुमको ही बिठाएं, जी चाहता है कि तुम्हें चूमते ही जाएं. और एक बार ये इनका जब शुरू हुई थी, तो लड़के के दोस्त ने उन लोगों को कहा था कि भाई अच्छी नहीं है, ये तेरे को धोखा देगी. तो लड़के के दिमाग में थोड़ा मन में एक डाउट रहता है. ओह शिट, मेरा टाइम खत्म हो गया. कहते हैं मुझसे सारे मेरे ही यार दुश्मन, कहते हैं मुझसे सारे मेरे ही यार दुश्मन, कि बेवफा हो तुम, कि बेवफा हो तुम, तुमसे न दिल लगाएं. अब इस पर फिर लड़का खुद को दिलासा देता है
कैसा दिलासा देता है कि जाना था हमको छोड़ कर तो कब के गए होते, जाना था हमको छोड़ कर तो कब के गए होते, अब तक नहीं रहते हमको ही तुम सताए, अब तक नहीं रहते हमको ही तुम सताए. Thank you. I told you if you all don't stick to your time limit, I'll start getting creepy. Sorry, bhai. There's some rules that we had to follow because we also have a show after this, so we have to wrap it up properly on time, and it's only fair to give everyone else the equal amount of chance. So, before I call on our next act, आपने कहा था एक, तो मुझे याद आ गया एक पोएम जो मैंने लिखी थी. आपने कहा था कि आप you try, I'm again going to switch to English. Apologies. When you want to say something to someone and sometimes जो thought था आपका, don't miss a connection, don't miss anything, just say it before it's too late. तो मैंने उस पर एक लिखी थी एक poem called Missed Connection, and I hope you guys enjoy it. वही प्यार पे ही है. It's called Missed Connection. It's basically the essence is say it now, it's gonna get too late otherwise. I was hoping to let her know how I felt as she waved goodbye, hugging and kissing everyone, just waiting to get on that airplane and fly. She wanted to go chase her dreams and had nothing to hide. I knew I had to let her go, not knowing when I would see her next, killed me inside. I stood there helplessly, watching her check her bags and wondering what could have changed if I just had the courage. What could have been? As she moved past each checkpoint, her memories kept flashing in front of my eyes. I tried to keep the silent heart beating before it breaks down and cries. Things change, people leave, and there's nothing we can do. But if you want to say something, say it before it gets too late, or you'll lose that too. Don't wait around for the perfect moment, because that's just a fantasy. You have to make each moment perfect to understand its gravity. You'll see her face everywhere, in every reflection. Just don't wait before she gets on some flight, or it'll simply be a missed connection. Thank you. Keep the applause going. We have final act. You guys have been brilliant so far. Keep the applause going for the final act of the evening. Ishpreet Singh. Good afternoon. Good afternoon. Hello, sir. I was liking the way he introduced you and everything. मुझे याद है आपकी फर्स्ट फिल्म मैंने देखी थी आपके बरस. जी. किस किस के घर पे कभी VCD और DVD प्लेयर हुआ है? So okay, there are people from that generation. It's good to know. हाँ, तो I remember that time. So ये early 2000s की बात है. तब क्या हुआ करता था? There was a thing called piracy. तब Netflix नहीं था, तो piracy हुआ करता था. तो तब so how movies used to be recorded in a small video camera and then published in CDs and वो distribute होती थी. Now the funny thing was कि a lot of these movies used to even come from the other side of the border. तो उनकी जो तो बीच में आपको ना उनकी वहाँ की फिल्मों की ये हमारी फिल्में होंगी लेकिन एड्स उनकी होंगी. तो पेप्सी कोला ये कोको कोला नहीं होगा, पेप्सी कोला होगा और समथिंग एल्स. सो आई रिमेंबर वॉचिंग हिज मूवी विद दोज एड्स इन द मिडल. छोटा बहुत था तो थिएटर में जाने का मौका नहीं मिला था, बट बिग फैन ऑफ योर वर्क सर. एंड थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द स्टेज एंड बिग अपलॉज फॉर एवरीबडी परफॉर्म्ड. थोड़ा और जोर से आपके लिए है, खुद के लिए. सी द गुड थिंग इज ऑफ बीइंग लास्ट इज कि आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हो. कहने में कह रहा था. बट नॉनदलेस वैसे सोचा बहुत कुछ था करने के लिए, बट टाइम की पाबंदी है तो एक ही चीज़ परफॉर्म करेंगे. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आज सुन ली है. कॉमन थीम रहा है लव. कॉमन थीम अगर पकड़ेंगे तो हम एक यूनिक चीज़ होती है कि प्यार करने से पहले प्यार के बारे में सोचने में हम ओवर थिंक कर लेते हैं. तो जब वो ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो हम हर चीज़ ओवर थिंक करते हैं. उनसे हाई कैसे कहे, जब उन्हें मिल रहे हैं तो कपड़े कैसे पहने. और उसमें अब इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल जो चैट्स होती हैं, सो यू थिंक एवरी टाइम यू आर टेक्सटिंग दैट पर्सन. Everything that you're texting also is something that you think about. So this is a small piece that I've written about overthinking about the text I need to send to someone. So it's like a romantic thriller actually. थोड़ा interesting लाने के लिए. I open my WhatsApp at sharp 9:42 p.m. I open our chat and begin to type. Each word carefully weaved, each sentence carefully crafted like a necklace of diamonds.
priceless, that I imagine to be tied with a tiny knot around your neck. After every line that I complete typing, I backspace each and every word, thinking it's not good enough for you. I ponder between similes and metaphors, between quotes and idioms, each possible tool available in the English language. I use thesaurus. I use thesaurus to find the perfect synonym to the word that I know. Asking for suggestions from friends, searching the internet, the World Wide Web turns into a rabbit hole, sucking me into the right answer to the wrong question. How to make you like me? But even after all of this, I still continue to think it's not good enough for you. Maybe it's not words. Maybe it's not words. Maybe it's just me. I, who's trying to make myself perfect for you. After countless writes and rewrites, I feel satisfied. Happy? That's still a far-fetched dream. After, finally, I hit the send button. The 2 ticks are a confirmation of a piece of my mind and soul reaching you safely. I then look at the time on my phone. It's 9:54 p.m. And thus begins the wait for your text. Each minute has 60 seconds, each hour has 60 minutes, each day has 24 hours. Ever wondered how many moments I spend in each of those seconds, hoping, praying, believing, calculating, estimating, and assuming? And assuming every word of your response. Planning what I would respond to your words. I lock my phone and then unlock it, waiting for that tiny sound loud enough to melt my heart. That lock screen then turns into a mirror where I see myself, my reflection, desperate in love. I quickly unlock the screen, not able to see myself, crumbling from the inside every second, waiting for your text. I waste my time in hopes to spend the rest with you. Am I going crazy in love? I wonder. Or is this how love stories are made? Thank you so much. So that was our final act for the evening. Can we have a huge round of applause for all the performers, for the audience, for Habitat Studios for organizing this, Aditi at the back taking your pictures, Vivian doing the live stream and the sound. You guys will get your pictures. I know people will be like, don't DM Habitat. Where are my pictures tomorrow morning? You guys will get them in 6 to 7 business days. आज Sunday है. Business day नहीं है. मत करो message उनको. Just, you'll get them in your DMs. You guys will get every picture that has been taken of y'all. And you guys will look good. You guys can put the H in your DP and look that you guys have performed here. पता है सबको करना है. मैंने भी किया था. But just thank you so much for being such a lovely audience. Thank you so much for doing so well. And if you guys want to, it's been live streamed and the entire event is going to be on YouTube. So if you guys take any clippings, and आजकल रीलें बहुत चल रही है ना, ट्रेंड कर रहे हैं रीलें. तो अगर रील डालनी हो तो please give credit to Indie Habitat. Like I said, IP is very important for an artist. Picture अगर बम्बल पे पोस्ट कर रहे हो अपनी तो वहाँ पे भी क्रेडिट दे देना, ठीक है? अच्छा हो. नहीं मेरे लिए भी है ना. You've not come across my profile yet, because obviously. But thank you so much for being a lovely audience. Before I go, I'm going to just narrate a small शायरी. तो आपकी इजाज़त से just to wrap up this evening. Thank you. ज़िंदगी अकेले ही काट दूंगा अगर तुझे ना मैं भुला पाऊँ. ज़िंदगी अकेले ही काट दूंगा अगर तुझे ना मैं भुला पाऊँ. तू बस एक आवाज़ दे और मैं 7 समुंदर पार चले आऊँ. पता है कि तेरे दिल में होगी मेरे लिए तो जगह कहीं. तेरे लिए नहीं बट पता है कि तेरे दिल में होगी मेरे लिए तो जगह कहीं. तू बुला के तो देख मुझे, पहुँच जाऊँगा मैं अभी वहीं. Thank you. Thank you guys. My name is Harsh Malhotra. You guys have been an amazing